Good morning, everyone. Good to see you back on Saturday morning. I see a couple of you have joined, not in the same quantity like we had last week, but I see a lot of you. And I have a long question from Raghav as well. Raghav, I'll answer that very quickly, but let me just see who all have joined. Hey, Sanchita, how are you? Raghav, I see you. Keshav, Vishan is there. Bhargavi, Wagdahi is there. Manvi, Sanchita. Cool, cool, cool. I'm good, Manvi. Thank you so much. Himanshi is there. Prateek, Keshav again, Nitil is there, Adesh, Sarvaswa, how are you? Hey Arun, Sagar is there. Nitil, I'm good. How about you? How are you doing? Hey Rohini, Anu is there, Rehan is there. Good, good, good. We'll just wait for another minute or so. We'll let others join in. किसी का फोन नहीं चल रहा है, चार्ज नहीं है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है. We'll give them a minute or so. Darshan has joined, Adish has joined, Sahil is there, Barkatullah is there, Zeba is there, Devesh, good, 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 good morning. I am good, Mayank, thank you so much. I hope you're also doing good, keeping healthy, playing some football or volleyball or badminton, kuch khelo, right? I started playing football from last week. मुझे तो बड़ा मजा आया काफी सालों बाद खेल के, which is good. I hope you guys are also playing something at least. नहीं खेल रहे हो तो please make sure आजकल में कुछ खेलने जाओ, even if it's a small thing. Just go out, play कुछ बैडमिंटन खेल लो, cricket, make some plan cricket खेलने का tomorrow with your friends. It's Sunday, go for cycling. I did it after a very long time. मुझे तो बहुत मजा आया. All good, Rahul. सब मस्ती चल रही है. How are you? Yes, Mayank, your comments are super visible to me. We'll come to that FDI, FII, आएंगे फटाफट से उस पे. Manvi, we'll come to that. All your questions will be done. I will complete chapter number 4 और आज हम करेंगे बहुत सारे MCQs out of syllabus. ठीक है, out of syllabus MCQs we'll do. I will do a quick 30-40 minutes MCQ KBC with you. एक KBC की तरह खेलेंगे. I'll post questions. We'll discuss the answers. 30-40 minutes full revision करेंगे. Chapter 1, 2, 3 का और chapter 4 तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं. So I'll ask some questions from chapter 4 as well. But majorly from whatever we have studied अभी तक, right? The entire syllabus of 1, 2, 3 and 4, उसका एक quick quiz करेंगे. ठीक है, चैप्टर 4 आई थिंक 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा. देन अनदर 30-40 मिनट्स इन दैट क्विज और फिर होपफुली चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा शुरू कर लेंगे इफ टाइम अलाउज. ठीक, दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर टुडे. ऑसम कीर्ति, इफ यू आर प्लेइंग बैडमिंटन दैट्स सुपर गुड. कल क्लास है? यस, कल क्लास है. गुड राहुल दैट यू आर आल्सो इन मॉज. ओ हिमांशु, आपके ग्राउंड में वाटर लॉगिंग है. कोई नहीं, साइकिलिंग चले जाओ और गो टू सम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. पे 50-60 रुपीज, पे एंड प्ले. ऑल यू हैव दीज कम्युनिटी हॉल्स और ग्राउंड्स. कुछ ढूंढ लो, मजा आएगा. For paper 3 and 4, we have to circle answers with black pen or dark pencil. See, I think in CA, what I remember, it is a black ballpoint pen. I am not sure if the rules have changed, but मेरे time तक or whatever exams I have given in my life after completing school, black ballpoint pen से ही OMR sheets भरी जाती हैं, right? Pencil से तो आप erase भी कर सकते हो, but इसीलिए what you can do is, if you're very quick, I used to do this, okay? अगर आपके पास time होता है, आप एक पेंसिल से यू सर्कल योर करेक्ट आंसर्स. ठीक है, एंड देन आपके पास एंड में 10 मिनट अगर बचते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू हैव स्पीड ओनली देन डू दिस. पेंसिल से मार्क कर लो पॉइंट्स, हल्का हल्का ग्रे कर लो उसको. एंड व्हेन यू आर श्योर, व्हेन यू आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स, व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर आंसर शीट, फटाफट से स्टार्ट कलरिंग ऑल दोज विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. ओनली इफ टाइम अलाउज. इफ यू आर कॉन्फिडेंट, सीधा ब्लैक से करते जाओ. Right? It's about time management. Exam is more about time management and less about what you know, is what I feel, right? वो इतनी जल्दी जल्दी you have to think and write an answer, कहीं फंस गए तो that time goes and it's not going to come back again. So that is more crucial. कल क्लास है दोस्त? Yes. It's black, right? Black ballpoint pen. Not an issue, Surya. We're just having some small chat. So now you're in time. We are yet to start the syllabus abhi. Cool, Nikhil. You played football yesterday. Awesome. Awesome. I'm good, Ankit.
Cool. Let me just quickly look at some questions that our friends have. Let's solve their questions and doubts and then get into chapter number 4. What is stimulus? Stimulus को आप दो तरीके से समझ सकते हैं. It's a very common English word if you start studying. Stimulus is more like starting something or helping something. Okay, there can be two ways. Stimulus is giving a start to something or helping or supporting something. That is called stimulus. Okay. Activity करना. So stimulus is starting something, creating an activity. किसी में कुछ, that is called stimulus देना. Okay. So for example, if I say I give you 10,000 rupees, so it is like a stimulus for you to start your own business. If I give you 10,000 rupees to start your business, that is a stimulus. I'm supporting you. I'm helping you to start an action, right? वो भी होता है stimulus. From a business perspective, I'm telling. Biology में उसका अलग मतलब होता है. ठीक है. ठीक है. There was a question from Raghav. Very interesting question, Raghav. I will just quickly read that and answer as I read the question. Flipkart started in India. Then how its headquarters in Singapore? Okay, so this is more of a good question, more of a chartered accountant related question. So a lot of companies register themselves in Singapore because the taxation is lower there. ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, कंपनीज एक्ट नहीं है, टैक्सेशन कम है, तो इस सब रीजंस की वजह से काफी कंपनीज सिंगापुर में, दुबई में अपने आप को रजिस्टर कर लेती हैं, इवन दो दे आर हैविंग बिजनेस इन इंडिया. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर. दो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ POEM. ठीक है, आप पढ़ोगे अभी इन योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेबस एज यू गो थ्रू डिफरेंट लेवल्स, इंटरमीडिएट, फाइनल, आर्टिकलशिप में जाओगे, आपको पढ़ने में आएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाट इज देयर फॉर यू इन द नेक्स्ट 3-4 years. There is something called POEM. Okay, there is called POEM, POEM, place of effective management. इसका मतलब सरकार क्या कहती है, इवन इफ योर हेडक्वार्टर्स आर इन सिंगापुर, दुबई, आप मॉरिशस में आपने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, बट इफ योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, असली धंधा कहाँ पे हो रहा है, देयर इज अ होल डेफिनेशन. सो वो आप पढ़ लोगे बाद में, बट द कॉन्सेप्ट इज अगर असली धंधा आपका इंडिया में हो रहा है, इफ द रियल बिजनेस, रियल मैनेजमेंट डिसीजंस आर हैपनिंग इन इंडिया, देन इट इज एन इंडियन कंपनी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लिपकार्ट इज एन इंडियन कंपनी. ठीक है, इवन इफ इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन सिंगापुर. Again, when Flipkart is called an Indian company, majority share is with Walmart, 80 to 83% Walmart के पास है. Why is it an Indian company? Again, the concept of POEM, place of effective management उसकी Bangalore में है. All the decisions related to Flipkart are taken in Bangalore. It is India. जब India में सारे decisions लिए जा रहे हैं, it is an Indian company. Okay. You will read about it as you like go forth in this entire course. Interesting course. If you have fun in understanding these complexities, मजा आएगा. Right? Awesome. In here you play basketball. It's a fantastic game. 15 minutes में your lungs give up saying कि और नहीं हो पाएगा. It's very very hectic game. So good that you're playing. I play every sport, bro. I play every sport possible, except a few, right, which are very technical. Chess नहीं खेल सकता मैं. I don't have those brains to play chess. Right, like a stimulus package announced by the government. You're absolutely right, Ankit. एकदम सही जा रहे हो. Great, Harshad. I'm happy that these classes are helping you. Cool. Stimulus, real life like situation. Okay. I didn't get you, Harshad, if you're meaning, but more like a help or a support is what stimulus is. Okay. Yes, Morvital, I am, luckily I cleared my examination, so I am a chartered accountant. I'm not a very smart person. I just cleared my exams by practicing a lot of questions, and that is what I keep telling you guys also. My trick has been practice the questions. I'm not very intelligent, I can tell you. School में I wasn't intelligent, मेरे marks बड़े अच्छे नहीं आते हैं. The only thing is I practice a lot of questions because I was very fearful. बहुत डरपोक हूँ मैं. ठीक है, so when, because I'm so डरपोक, I'm so like डरा रहता हूँ, so I practice a lot of questions out of that fear and it helps me. Cool. Okay. Dubai में भी tax नहीं लगता. That is right. If any company is headquartered in Japan and its branch in India, then it will come under POEM. There is a whole definition, Samir. I am very happy you guys are curious. After this session, क्या करना? You know the concept now, POEM, right?
just go to Google, write down what is poem for companies in India or whatever, you will search Google, आ जाएगा. There are 3 4 5 conditions, वो पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. I'll not get into details, might confuse a lot of other people. If you're interested, after the session, go पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे, lifetime concept clear हो जाएगा. ठीक है. Sure, Raghav, there was another question from you. What is WS retail? I'll come to that. मेरे को last में, after I do the revision, I will tell you a very interesting concept about e-commerce companies जो आपको शायद नहीं पता होगा. I have worked in e-commerce companies, right, in finance, so I know a concept. मुझे याद दिलाना. I will tell you very interesting concept which you can go and tell your friends also. ठीक है. I'll tell you a very cool concept how these companies function. तो मेरे को एकदम एंड में सेशन में फिर से बताना what is WS retail. Just make me remember and I'll answer that. Okay, let's get back to business, boys and girls. We are at chapter number 4. Kafi kuch we covered. We covered majority of the things. We talked about the history, the ancient way of how the business policies have been, how India turned after independence to a mixed economy. We gave an example of thali milti hai sarkar mein, railway canteen mein, and even a restaurant. So India is more like a mixed economy where you have a lot of options, right? India is an economy where the consumer has a lot of options, whether they want to go for a restaurant, they want to go for a government subsidy, they unko sasta chawal lena hai, mehenga chawal lena hai, they have all the options. The customer has a lot of options, the consumers have a lot of options. और वही है what is a mixed economy ki sarkar, there is a control of government, but there is also private companies which are doing business. There is Indigo, there is SpiceJet, there was Air India. Abhi Tata ne kharid liya, that's a new thing. But essentially pehle to wo government ki airlines thi, right? So there was a government airlines, there was private airlines. The consumer has the option. उनको गवर्नमेंट में जाना है, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाओ. यू वांट टू गो टू अ प्राइवेट कंपनी सर्विसेज, यू गो टू अ प्राइवेट कंपनी सर्विसेज. इट्स फाइन. द गवर्नमेंट डजंट क्वेश्चन यू, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. द गवर्नमेंट इज नॉट क्वेश्चनिंग यू कि आपको क्या पसंद है, आप करो आपको जो करना है. दे गिविंग यू ऑप्शंस, राइट? Cool. Let's go to a next concept wherein we'll study about the specter of government policies in business. ठीक है, अब समझते हैं इसको बहुत simple तरीके से. I'll explain you and it'll be very easy for you. Okay. Now, give me example of businesses in India. ठीक है. Quickly, I want everyone to be active on the chat, please. The more you are active on the chat, the better and interesting this subject becomes. आपको revise करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. If you start answering my questions, I'll ask you very simple questions. I'll give you the concept. हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ठीक? Now, give me some examples of very raw businesses. मेरे को बड़ी companies के नाम नहीं जानने. I don't want you to name big companies. I want you to tell me what are the small businesses in India. ठीक है? I don't want big names. I don't want Reliance, Jio, Flipkart. हो गया, हमें पता है बहुत बड़े हम है. Tell me small businesses. कुछ नाम मत बताओ, but business बताओ. For example, sari shop in Chandni Chowk or a cloth manufacturer in Ludhiana, right? Tell me such businesses. कुछ businesses के examples लेते हैं फटाफट से, and then we'll crack what the concept I'm trying to teach here. फटाफट से. Textile businesses, vegetable seller, awesome. What more? फटाफट से टाइप करते जाओ. I want this entire chat box to be filled with answers. Okay, retail business as grocery store, ठीक है, general store, that is right. और क्या होता है? Fruit seller, ठीक है. LED manufacturer, general store, Bata फिर से बड़ा नाम हो गया. Give me some thrift stores, right? You have these Instagram influencers selling on Instagram, t-shirts बेच रहे हैं, baggy shirts बेच रहे हैं, high like these long t-shirts that are coming in fashion. That is there. That is good. Food vendors, small restaurants, dhabas, salt industry, local sweet shop, mithai wala, halwai. Correct. These are all businesses, right? We are exactly. Now we have halwai hai, pan shop, dairy business, street vendor, cyber cafe, gift shop, milk seller, stationery shop, pickle business, achar, that is right, tours and travels, mechanic, awesome. ये देखो, Roshan Singh Sodhi भी आ गए from Tarak Mehta. There, mechanic is also there. That is right. Your dad has a retail business, grocery store. Awesome, Saima, right? That is a business. He's doing a business. Day in, day out, he's doing business. Okay.
अभी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, देखना. दिस चार्ट इज व्हाट इज रिलेटेड टू दीज आंसर्स. नॉन फेरस मेटल फाउंड्री, ओ माय गॉड राघव, आप तो बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल दे रहे हैं. नॉन फेरस मेटल फाउंड्री, ठीक है, विल टेक इट एज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, more of automobile parts or heavy industries making small parts. That is right, which is right. Juice shops, salt traders, milkman. Anokha Sari Center is famous in Rani Bagh. That is good. That is again a business that these guys are doing, right? You has Sizer Bazaar in Meerut. Meerut mein there is called Sizer Bazaar. That's an interesting name. Okay, jewelry shops hai, cement shops. Then you have cement traders. But you have Pithani manufacturers in Jiola. Okay, Faizan, that's something new I'm reading. Okay, food vendors, stall vendors. What else? Baker है, milk है, chai business, paper business, right? Samir, I've read all your answers. Maybe नाम नहीं ले रहा हूँ, right? दूध वाला है, okay, पान पत्ती है, saloon है, that is right, tiffin services, cold drink, जबरदस्त, door locks businesses, small restaurants, that is right, pani puri, Shakti polymers, restaurants, pottery, handicraft. Exactly my point. We all are getting so confused in these chapters कि सिर्फ रिलायंस, अदानी, टाटा, सिर्फ यही बिजनेस है बॉस. नहीं, नहीं, असली बिजनेस तो जो आप बोल रहे हो, दिस इज रियल बिजनेस, राइट? This is actually the lifeline, the heartbeat of a country like India. These Tata, Ambani's, Reliance are huge names and they will be there. But the common man, we are 150 crore people in this country. We have businesses, we have thriving businesses, we have businesses which are taking care of our families, right? अब ये सब businesses को support करना, listen to this very, very carefully now. We are talking about government policies for business. सरकार इन सारे businesses को जो आप, the names, the businesses you have just told me, how is the government helping them? How is the government using the tax money, using the GST collection, using the money it has, using the loans it has taken from foreign banks, वो इन businesses के लिए कैसे use कर रही है? That is called government policies for business. Okay, let us quickly understand. Consider all these businesses when we are talking about this. Okay, छोटे छोटे business, all these business across India. सोचो, we have 30 plus states, we have union territories, north east से लेके गुजरात तक, कश्मीर लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, मध्य प्रदेश, मुंबई, Odisha, then you have Tamil Nadu, you have Hyderabad, you have Kerala, Kochi, all these places, right? यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल, हर जगह इतने सारे लोग हैं doing so many businesses. How is the government going to help them? How is the government going to help them? Is by making business oriented policies, by making policies which help the businesses which are in the country. ठीक, कैसे करते हैं ये? How do they do that? Okay, there are two things. When we talk about government policies, we talk about economic policies. Okay, we are talking about government's economic policies for business. दो टाइप की होती है दोस्त, ठीक है? एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी. विल स्टडी दैट वेरी क्विकली, आई विल एक्सप्लेन दैट. एंड देयर आर आल्सो सेक्टर रिलेटेड पॉलिसीज, ठीक है? लिसन टू दिस अगेन वेरी केयरफुली. देयर आर सेक्टर रिलेटेड पॉलिसीज आल्सो, लाइक agriculture related policy, industry related policy, foreign trade and investment related policy, handicraft policy, service policy, education policy, teaching policy, skill development policy, Medicare policy, then you have medical equipment policy. कि क्या चीज promote करनी है? The government has data. The government, the bureaucrats, the ministries sitting in the government, they have data which tell, for example, I'll give you a very easy example. आप समझो कि सरकार में होता क्या है, ठीक है? Now, the data that comes to the ministry is, ministry के लोग, the economics, right? A lot of your friends are doing economic honors. A lot of students study economics, masters in economics. All these people are then hired. All these people go and work in government policy making, right? UPSC देते हैं, IAS बनते हैं, economic advisors बनते हैं, bureaucrats बनते हैं. Now these people go and they study data of the country and they identify. For example, वो पढ़ते हैं कि इंडिया में in the last 10 years
the number of people having diabetes has increased by 20%. Acha. Now this data says that 20% in the last 10 years, we used to have 1 lakh patients of diabetes. Now we have 1,20,000 patients of diabetes in India. I'm just giving you an example. And in the next 10 years, this 1,20,000 will become 5 lakhs because a lot of people are becoming diabetic. इससे सरकार को क्या पता चलेगा? सरकार is now thinking, how do I tackle this problem? I will tackle this problem by promoting policies into diabetic medical care. Companies, manufacturers, foreign companies who are creating machines or medicines for diabetes or creating injections or insulin injections, we will promote these businesses. Okay? These are called industrial policies और फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कि बाहर से कंपनीज को लेके आओ कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, because in the next 10 years the country is going to face a problem and we need products for our population. ठीक, अब सरकार knows a problem and it has to create a policy around it. Industrial policy, foreign trade policy, agriculture policy. अच्छा, agriculture policy क्या है? सरकार knows कि every year India needs 7,000 tons of rice. I'm giving you an example. 7,000 टन चावल चाहिए पूरे इंडिया को हर साल. Now there are rains, there are cyclone आ गए, कोई ज्यादा बारिश हो गई कहीं पे, there are floods everywhere in India. There were floods this time. Wheat and rice की जितनी भी agriculture produce थी, now it got damaged. क्या करेंगे? कहाँ से चावल लाएंगे? भूखे थोड़ी ना मरेंगे लोग. Now you have to find a solution. So what they do for agriculture policy, what they say, we will give subsidy to the farmers. फार्मर को तो बहुत नुकसान हो गया, फार्मर को हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी. सो दे गिव सब्सिडी टू फार्मर्स, बट लोग भूखे मर जाएंगे, चावल आटा नहीं है. व्हाट विल दे डू? दे विल चेंज देयर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. They would have banned import of rice from, let's say, Afghanistan or XYZ, let's say Indonesia or Thailand. यहाँ से चावल ये कहते नहीं, हमें आपसे नहीं चाहिए, we will produce our own rice. But अपनी तो सारी फसल, अपना all the entire agriculture is damaged. You need to change the foreign policy now, and you have to tell them that, okay, we need rice from you. Please send rice from your country, and we are ready to pay money to you. Okay. Now what happens is, अब थाईलैंड से चावल आ रहा है, अफगानिस्तान से चावल आ रहा है, चाइना से चावल आ रहा है, because Indians need rice to sustain their life, right? खाना तो चाहिए. अब इन सारी कंट्री से we are bringing rice. पैसा कहाँ से दोगे? पैसा तो है नहीं. पैसा वी हैव गिवन टू अपना फार्मर्स एज ए सब्सिडी की, यार वो तो भूखे मर जाएंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे. आपके पास जितना भी फंड था, द गवर्नमेंट स्पेंट दैट मनी ऑन फार्मर्स. अब चावल खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लोगे? To buy rice, you will take loans from, let's say, Netherlands or US or UK. You'll go to UK, Indian bureaucrats, Indian foreign officers, they go to UK, they go to International Monetary Fund, the World Bank. उनके पास जाते हैं, they tell, see, we need rice from Thailand and Afghanistan and we need $7 billion for that in the next 3 years. हमें 3 साल के लिए $7 billion का लोन दे दो. Right? Now, I'm coming to that, Abhinav. I'm coming to that. Listen to this carefully first, okay? Now, give me $7 billion of loan, okay? To give, मेरे को चावल खरीदने हैं. This is fiscal policy. Taking a loan from World Bank, that means सरकार has to pay an interest. सरकार को interest pay करना है लोन पे. तो वो interest किससे कमाएंगे? आपसे, जनता से लेगा वो पैसा. How will government take पैसा from the जनता? Sarkar will say that, boss, see, the Sarkar was earlier, आप FD में पैसा लगाते हो. अभी समझो इसको. Think from a very wider perspective. I'm telling you, this will clear all your doubts for life. सरकार ने फॉरेन से लोन लिया और उसका इंटरेस्ट भरना है. Now they have to pay interest on this big loan they have taken for their foreign trade and agriculture policy. इस पॉलिसी के लिए फिस्कल पॉलिसी में गए. फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, बजट. Fiscal policy are the policies related to tax rates, budgets, interest rates, inflation. ये सब fiscal policy में आता है. ठीक है? Everything related to these decisions is fiscal policy. Now,
अब इंटरेस्ट ज्यादा भरना है तो इंटरेस्ट का पैसा हम कहां से लेंगे? ओके, यू विल टेक दिस मनी फ्रॉम द जनता ऑफ योर कंट्री. अब जनता ऑफ द कंट्री से कैसे पैसे लोगे आप? What you will do is, now you would have heard your parents or your siblings, elder brother, sister putting money in FD, putting money in banks, saving bank में डालते हैं, and now they will be saying कि यार FD के रेट गिर गए. FD पहले 10% इंटरेस्ट देती थी, आज सिर्फ 5% इंटरेस्ट देती है. ठीक, right? So earlier if you used to do fixed deposit, it was 10%, now it is only 5%. ऐसा क्यों हो रहा है? Because the government is reducing the interest rate because it has to pay more to the foreign banks. अभी वो जनता को पैसे नहीं दे सकती, 10% इंटरेस्ट आपको सेविंग्स के लिए नहीं दे सकती. So it is cutting down on money outflow to the जनता, saving that money and paying interest for your agriculture and foreign trade policies, right? All this gamut, all this point, all this jo jhamela, the web of all the decisions is government policies for business, right? Agriculture policy, you know, industrial policy, you know, you understood foreign trade policy, you understood fiscal policy also. ठीक, what is monetary policy? Monetary policy का concept बहुत ही simple है. Monetary policy means how much money should be there in the hands of the people to spend. Listen to this again very carefully. Monetary policy of the government is how much money should be there in the hands of the people to spend. उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. कितनी करेंसी होना चाहिए, कितना लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए. सो हाउ डू दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द हैंड्स ऑफ पीपल? बाय devaluing the currency or by giving them free loans, सस्ते लोन देके उसको मॉनेटरी पॉलिसी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. अब आप समझो, इफ आई टेल यू, okay, if I tell you what is monetary policy का classic example देता हूँ. If I tell you that you can buy an iPhone which is a 60,000 rupees phone, अभी if I tell you you go and take it on an EMI, you will say यार 13-14% interest rate लगता है. That means you cannot buy that. You will think यार ये तो बहुत महंगा है, right? It is very costly, I can't buy this. The moment I tell you सिर्फ 1% interest rate लगेगा, मेरे से लोन ले लो, buy an iPhone and only give me 1% interest rate, you will go and buy it right away loan पे, because interest सिर्फ ₹1 देना है. ठीक, now 1% देना है, sorry. This is monetary policy. They are increasing your spending power. The government is increasing your spending power because when you spend more, you give more tax. जब आप ज्यादा खर्चा करते हो तो सरकार को जीएसटी भी तो ज्यादा मिलता है, right? All of this is interlinked. You have to understand this as a chartered accountant now. When you spend more, the GST collected by the sarkar also increases. When the GST increases, right, तो क्या होता है? Collection, सरकार के पास पैसा बढ़ता है. When sarkar has more money, it can take more decisions on development of the country, right? That is why when you see the headlines or newspaper अगर आप पढ़ते हो, they say the consuming power of India is increasing. A lot of your friends, as on date, I can assure you, a lot of your friends have iPhones, MacBooks, घर में बड़े बड़े गैजेट्स लेके घूम रहे हैं, 20-20 हजार की घड़ियां पहन के घूम रहे हैं, 7,000 के जूते लेके घूम रहे हैं. They are doing that, right? Why? Because the consumption power of the country has increased. The consumption power of India as a nation has increased, which has essentially increased the tax collection by the government. Correct है? अब 15%, 12% आप GST भरते हो. मान लो you eat out, you eat बाहर every day, ठीक है? You go to a restaurant, आप किसी भी कैफे में जाते हो, कहीं जाते हो, you eat every day. उसके बिल पे 5% GST लगा होता है. Correct? Now you go and buy a chicken roll, you go and buy a sandwich from a cafe, you sit with your friends in a cafe, order cold coffee, which is 150 rupees cold coffee, 5 लोगों ने मंगवाई, which is a 700 rupees bill, 700 rupees पे 5%, which is 35 rupees. ठीक है? अभी 35 rupees का आपको GST लग गया. अब 35 rupees का GST is collected by the सरकार. You spending money essentially increases the tax collection of the government also. You are
is consuming a cold coffee for 150 rupees, your consumption power has increased. आप अमीर होते जा रहे हो दिन बर दिन, correct? Similarly, सरकार भी अमीर हो रही है. This is monetary and fiscal policy का collation. Increasing the consumption power of the country by supplying more money, ज्यादा currency लोगों के हाथ में देना, ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में देना कि जाओ खर्चो. Because fiscal policy में tax collection ज्यादा हो जाएगा, right? So everything, boss, is interrelated for government. Government is very smart, right? It creates fiscal policies, it creates monetary policies to increase collection so that it can promote agricultural policy, industrial policy, foreign trade policy. ठीक, ये concept exam perspective से कुछ भी नहीं है. I can assure you, I'm just giving you extra knowledge because I know book तो आप पढ़ लोगे, ठीक है? I want these sessions to be more interactive and helpful for you throughout the next 5-6 years. Book में ये सब कुछ नहीं है. This is not there in the study material. This will not come in your examination. I can assure you. ये exam में इतने depth पे नहीं आएगा. I'm just giving you this information because I think it is important for you. Cool? Okay. Exam perspective से you know what it means. Exam में इतना depth आएगा नहीं पर. Okay, let us go to the more exam-oriented things. भावनाओं में ना बहके, let us value the time we have and let's go to the next one. I get so for भावनाओं में बहोड़ that ठीक है. There's a question on your screen. Very quickly, let us see if you have understood the concept or not. Stimulus package for MSMEs in India would fall under what? Stimulus package for MSMEs in India would fall under what? %30% tax on crypto is part of fiscal policy. That is right. Yes. Money supply by RBI is a monetary policy. मानवी chapter number 5 का वेट करो. RBI के ऊपर पूरा 15 स्लाइड है मेरे पास. ठीक है. Fiscal, macro, sectoral, fiscal, sectoral, sectoral, fiscal. ठीक है. There is a lot of confusion. Let's see what is the right answer. Stimulus package for MSMEs in India would fall under what? It will fall under fiscal policy. ठीक है. It will fall under fiscal policy. पैसे से रिलेटेड दोस्त कुछ भी होगा. पैसे से रिलेटेड कुछ भी होगा, फिस्कल डाल देना. सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड कुछ भी होगा. इफ एनीथिंग इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी, मॉनेटरी पॉलिसी डाल देना. एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, anything related to money, interest rate, subsidy, tax, budget, expenditure, कुछ भी होगा, fiscal policy डाल देना. ठीक है. And if there is a name of an industry or a sector की agriculture के लिए, now I am saying MSMEs, but MSME can be in agriculture, can be industry, can be foreign trade. I'm not defining any sector here. I'm just saying for micro, small and medium enterprises के लिए stimulus package खर्चा कर रही है सरकार. सरकार is giving them सस्ता loans, right? Fiscal policy में डाल देना. Awesome. Let's go to the next one. There are certain macro policy indicators. ठीक है. There are certain macro policy indicators which tell you the condition of the economy of the country. इसको फटाफट से समझते हैं. एक एग्जाम्पल ले लो. आपको बुखार है. How do you check you have a fever or not? Tell me. How do you check if you have fever or not? कैसे चेक करते हो? कैसे चेक करते हो कि you have a fever or not? First answer coming in from Chahal. He's saying thermometer. Awesome. That is right. कोई और तरीका? thermometer. हिमांशु, मयंक, हिमांशी saying, भूमिका is saying, Darshan is saying thermometer, right? Exactly. When you become very hot in a different sense in the temperature, right?
ऐसा मत बोलो कि अब I from 16 years now I'm 21 years I have turned very hot, तो मेरे को बुखार है, वो वाला hot नहीं है, टेम्परेचर वाला हो रहा है. So check body temperature with the help of thermometer. That is right, body temperature, awesome. Which means thermometer helps you as an indicator of your body's condition. Simple है. Thermometer help करता है to understand your body's condition. Going to a doctor, body temperature nubs check कर लेते हो, ठीक है? That is how you check that. Thermometer. Okay. I'll give you another thing now. Let me say there is a country. Let us take an example. Okay, let us take a random example. There is an African country, let's say Namibia, ठीक है? या फिर हम कोई और country ले लेते हैं, मान लो तंजानिया ले लेते हैं. Now the Tanzanian rupee, the currency of Tanzania and rupee and Indian currency में फर्क है 1000 rupees का. That means 1 rupee in India, right? India का 1 rupee is equal to 1000 rupees in Tanzania. 1 rupee in India is equal to 1000 rupees in Tanzania की currency में. Which is a poorer country out of India and Tanzania? Which is a poorer country in India and Tanzania? 1 रुपए इंडिया का, 1000 रुपए तंजानिया का है. कौन सी ज्यादा गरीब कंट्री है और less developed, if I put it in a different way? Tanzania, right? Darshan says Tanzania, Raghav says Tanzania, Varat says Tanzania, Vaishnav says Gunjan says Tanzania. Okay, Harshit says 1 rupee has the power of exchange for more Tanzanian currency. That's right, Harshit. Rohini says Tanzanian. What else? Any other one who thinks India? No. Okay. Tanzania. Bhumika says, Barkudala says, Himanshi saying, cool. I have Mrunmai saying India. Okay, Mrunmai, you're saying India. Surya says Tanzania. Okay, Darshan Koshti is saying Koshti. Okay, Tanzania. Then you have Faizan, Ankit, Rekha, Anand, Saima, all saying Tanzania. That is right. क्या है ये? It's a macro policy indicator. Exchange rate, currency exchange rate से आप पहचान लेते हो कौन सी ज्यादा गरीब कंट्री है. Hence, these things like GDP, inflation, tax, interest rate, exchange rate, ये सब are macro policy indicators जो आपकी economy, which are telling you about the condition of the country, of the country's economy. These are indicators which are telling you about the condition of the economy. ठीक है? जैसे कि आपका GDP है, inflation है, tax rate है, interest rate है, exchange rate है, ये सब बताते हैं आपको कि how is the country doing. Very quickly, I'll not go into details. Very quickly, you answer all the questions. GDP growth of India is 18%, let's say 8%, and GDP growth of Indonesia is 12%. कौन सी country better है? फटाफट से. I will not spend more time. 30 seconds. Be very quick on the chat. GDP growth rate of India is 8%. Thailand or let's say Indonesia की is 12%. Which Thailand बड़ा है या Thailand 12% पे, India 8% पे है GDP growth. कौन सा ज्यादा better country है और in terms of growth? India is better or Thailand is better? Oh sorry, Indonesia बोला था मैंने, Indonesia रखते हैं, मैं खुद ही confuse हो रहा हूँ. Indonesia, right? Indonesia 12% and India at 8%. Indonesia. Majority of you saying Indonesia. Manvi saying India. No, Manvi. 12% growth अगर Thailand की, oh sorry, Indonesia, बार बार Thailand आ रहा है. So Indonesia की हो रही है, so that is a better country. That is a better condition of an economy, right? वो हमसे ज्यादा grow कर रहे हैं, हमसे तेजी से grow कर रहे हैं. ठीक है? Awesome. Next, inflation India में 7% है. इन्फ्लेशन इंडिया में 7% है, यूके में 3% है, यूनाइटेड किंगडम में 3% है, इंडिया में 7% है और जापान में 31% है. इंडिया में 7% है, यूके में 3% है, जापान में 31% है. कौन सी इकोनॉमी इज द बेस्ट पोजीशन टू बी इन? Which economy is in the best position? Barkatullah says UK. Okay.
UK. Karan says, Raghav says India. Karan says India. Bhargavi says Japan. Okay. What else? Very quickly. Very interesting concept, दोस्त. अभी एक और चीज नहीं पता चलेगी आज जिंदगी में आपको. UK, then India and Japan. UK. Ankit says India. मेरा भारत महान. Okay, UK is better. Japan is the worst. Japan is okay. UK. Kirti says India. Sahil says India. Harshit says India. UK. US कहाँ से आ गया विनाश? US तो एग्जाम्पल भी नहीं है दोस्त. UK लिखना होगा, समझ गया. Devesh, UK. Japan, India. The correct answer is India. Inflation should be moderate. ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए. It shouldn't be very high, it shouldn't be very low, it should be moderate. Inflation, the best country to have an inflation is a moderate inflation. अब आप पूछोगे क्यों ऐसा क्यों, बताओ, सोचो. Why does a country which has a moderate rate of inflation the best country? Inflation तो एकदम जीरो होनी चाहिए ना. तो इंडिया क्यों अच्छी कंट्री है having a 7% inflation? Why is India a good country to have a 7% inflation? मुझे बताएगा कोई? People who said India, मुझे बताओ. People who said India, why was it? Harshit has given the answer, which is the right answer. I'll hold it, Harshit. You're right. Let's see what others have to say. India because moderate inflation, that is right. Because inflation shows growth. That is right, Ishan. That is right, Harshit. India because of moderate inflation, because growth margins, profit margins, right? Growth, inflation is an indication of growth. Okay? Remember this, inflation is an indication of growth. 31% inflation is not an indication of growth. It is an indication there is something very wrong about your country. 31% से कोई grow नहीं करता है, कुछ गलत हो रहा है. But अगर 7 to 8% grow कर रही है economy inflation में, that means people have the opportunity to become rich, right? Inflation का मतलब है prices are increasing. Inflation means that the prices are increasing. When the prices are increasing, that means businesses are going to make more money. When businesses are going to make more money, their employees are going to get higher salaries. Prices increase हो रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसा मिलेगा. That means a decent moderate inflation makes a country richer. उसको अमीर बनाती है. So इंडिया में अगर 8%, 9% inflation जा रही है, which is essentially a good sign, which means businesses ज्यादा पैसा कमाएंगे और employees को ज्यादा पैसा देंगे और खुद तो कमाएंगे. People who are doing business are going to become rich. And people who are working for them are also going to become rich because they will get higher salaries. When they get higher salaries, when they get higher profits, they pay higher taxes. Win-win position for a government to be in, right? Government तो चाहेगी यार inflation बढ़ा दो, लोग अमीर होंगे तो टैक्स ज्यादा भरेंगे. Simple है. Inflation moderate होना is a sense of growth. Moderate inflation is on average, ठीक है, on an average, moderate inflation is let's say 6 to 8 to 9%. 6 से 9% के बीच में moderate inflation होती है. For a country like India, it might be very different for a country like UK. It might be very different for a country like Netherlands or Germany. Germany के लिए moderate inflation 2 से 4% is also moderate. Already अमीर है वहां के लोग, और कितना अमीर करोगे उनको, ठीक. For a country like India especially, 6 to 9% inflation is a good inflation. ठीक है, होनी चाहिए, तभी तो आप और मैं पैसा कमाएंगे ज्यादा as individuals, right? Prices बढ़ेंगे. मैगी 10 रुपए की 14 रुपए की हो गई, 15 रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी. Nestle is making more money, the employees will get more money, you and me will start making more money so that we can buy those basic products which have become महंगा, right? 1 kg घी has become 550-600 rupees का 1 किलो घी हो गया है, right? अब आप कहोगे यार ये तो बहुत महंगा हो गया, हम कैसे पैसे कमाएंगे? Exactly my point. This stress, this fear of making more money will help you grow as a country,
राइट, इसलिए इन्फ्लेशन होगा। अगर इन्फ्लेशन ही ना हो, 10 साल से प्राइजेस एक ही हो, 10 साल पहले आप घी खरीदते थे 200 रुपए किलो, आज भी आप 200 रुपए किलो खरीदते हो, यू डू नॉट हैव एनी एस्पिरेशन टू ग्रो बिकॉज प्राइजेस वहीं के वहीं है। मैं क्यों मेहनत करूं और ज्यादा, मैं क्यों मेहनत करूं और काम क्यों करूं मैं और ज्यादा? Unless there is inflation, you will not have that hunger for growth, right? That is why for a country like India, inflation is good. ठीक? It's a huge burden, Arun. Essentially, India is a classic problem of population also. ठीक है ना? एक तो हम लोग बच्चे करना नहीं बंद कर रहे हैं। 150 करोड़ लोग, which is like almost what 8 billion people on earth, जिसमें से 1.5 billion are in India। कितना परसेंट हो गया? 20%। 20% धरती की जनता भारत में रहती है। कितनी हर यहाँ प्रॉब्लम होगी दोस्त, ठीक है? unless you we stop doing kids, right, across the nation, जब तक बंद नहीं कम कर दो, but unless we solve this problem of overpopulation, कुछ भी पॉलिसी लगा लो दोस्त, पक्का फेल होगी। ठीक, कूल। आई एम नॉट सेइंग कि आप मत करना, आपकी मर्जी है, बट हाँ, बी वाइज। Okay, let's go to the next topic, which is policy formulation and impact transmission. That means पॉलिसी बनती कैसे है। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं इसको डीप में नहीं जाना। वी डू नॉट हैव टू गो इनटू वेरी डेप्थ, नॉट अ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक एज वेल। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है पॉलिसी कंटेंट, then you have institutions, then you have instruments, and then you have market participants। ठीक, सिंपल है। आपके घर में डिसीजन कैसे लिया जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट में भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन वैसे ही होता है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जांपल इन योर हाउस। आपके घर में चलते हैं, लेट्स गेट इनटू योर हाउस एंड लेट्स से यू वांट टू गो आउट फॉर अ पार्टी। ठीक, दिस इज योर कॉलेज फर्स्ट ईयर, लेट्स से यू हैव योर 12th क्लास फेयरवेल पार्टी। चलो 12th क्लास की फेयरवेल पार्टी करते, सबकी हुई होगी। 12th class farewell party, it was a late night party, you wanted to dress up and go out, रात को 8 बजे निकलेंगे, 1-2 बजे तक रात को आएंगे, and you had to create that, you had to get approvals of your parents in your house। okay, now आपने क्या किया? So you created a context, a policy context to your parents, right? You created a policy context to your parents. This is my final day in the school, all my friends are coming, mujhe jaane do, right? This is a lifetime opportunity, I will make memories, I will not be very late, time se aa jayenge, phone kar dungi, aapko message kar dungi, right? You created a context for them, then you created policy content, यहाँ जा रहे हैं, but you give details to them, right? इस क्लब में जा रहे हैं, इस होटल में जा रहे हैं, ये this वाला friend is going, this वाली friend is going, talk to their parents, वो भी जा रही है, वो भी जा रहा है, कैब करके जा रहे हैं, कैब का नंबर भेज दूंगा, right? Policy context, you policy content create किया। Then you went to the institutions, first you went to your mother, then you went to your father, then you brought your elder brother or sister to help you, right? Institution के पास जाते हो आप मदद मांगने की, यार प्लीज हेल्प कर दो, मेरी सुनो। यू पटाओ योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, यू पटाओ योर मम्मी, एंड देन यू गो टू योर फादर एंड आस्क कि देखो वो लोग मान गए हैं, अब आप भी मान जाओ, राइट? इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो टू गेट हेल्प। देन यू क्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स, right? You use instruments like what? You show them the details, you give them messages, you give them affirmations कि हाँ सही है, ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे, आप बताओ क्या करें, right? You tell me what should I do? You ask them questions, right? And then you go to market participants। अपने दोस्तों को फोन करते हो, या मेरी मम्मी पापा को फोन करके बताओ हम जहाँ जा रहे हैं, right? Give them confidence कि हाँ तू भी जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ, give them confirmation। So you bring market participants and you create all this to formulate your plan of going to the farewell party। सरकार भी यही करती है दोस्त, मोदी जी भी यही कर रहे हैं, और the bureaucrats or all the CMs, Kejriwal or Yogi Adityanath or whatever these politicians are, right? All of them are doing the exactly same thing। कैसे कर रहे हैं?
Policy context. Why do you want a policy? Okay, now let's say another एक और example लेते हैं. अभी there was a latest case, this Shapurji Palonji head Cyrus Palonji, he died in an accident. Now the policy context was the people sitting in the back seat of the car, उनको भी seat belt लगानी है. ये इन्होंने पॉलिसी निकाल दी. इसके लिए हाउ डिड दे फॉर्मुलेट द पॉलिसी? पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट क्या आया? देयर वाज अ रोड एक्सीडेंट ऑफ अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी. तो लोगों को लगा अरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसको तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. सो पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट आ गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर रोड सेफ्टी सिस्टम, देयर इज अ पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट दैट वी नीड टू रिजॉल्व. सो वो पॉलिसी कंटेंट लेके आए. पॉलिसी कंटेंट क्या लेके आए कि एवरीवन इन द बैक सीट आल्सो शुड वेयर अ सीट बेल्ट. They went to the institution, which is Road Safety Authority, Ministry of Roads, Ministry of Highways. In सब के पास गए and they said कि okay, this is the proposal. Can we implement this? The institution said yes, it is a good policy. Let us go and do that. Then they brought instruments. इंस्ट्रूमेंट क्या था कि अगर आप बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपको 500 रुपए चालान लगेगा. इफ यू आर नॉट, इफ द पर्सन सिटिंग इन द बैक सीट इज आल्सो नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, you will be fined rupees 500. Now this fine became an instrument to implement the policy. And market participants, they went to the real people, they went to the jo road pe you have traffic security or traffic policemen or police women. They went to them, they understood that is it feasible, can you check that, is it feasible for you to check that. They took data, they took feedback from the market participants, and then it is finally implemented. ऐसे बनती है दोस्त पॉलिसी. सरकार में भी जो आपके घर में आप करते हो, सरकार भी वही करती है. ठीक, वेरी सिंपल. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस or we go to the next one? Quickly give me a thumbs up. Okay, next. फटाफट से चलते हैं. बहुत लंबा खींच रहा हूं मैं चैप्टर, आई नो, बट आई थिंक these are important things for you from a long term perspective. चलेगा, बहुत टाइम है अपने पास, रिवीजन भी कर देंगे. Absolutely, Bhumika. It's one of the toughest things to do to convince your parents for. I agree. I agree. But मजा ही वो है. Let's go to the next one. Cool. चलते हैं next पे. क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्विकली फटाफट से आंसर दो और आगे चलते हैं. Bank rates being adjusted to increase or decrease credit supply in the economy. Oh, super Kirti, I'm happy it's helping you. Let's see what answers you guys give. Okay. Can CA work in RBI income tax department? Absolutely yes. Absolutely yes. They do. A lot of them do. Policy, policy instrument, policy context, content, market पर सारे आंसर्स आ गए. चलो अच्छा. You will anyway get break when we switch to revision classes. तो आपको break मिल जाएगा अगर. Policy instrument. ठीक है. This is the answer. Bank rate is an instrument, दोस्त. Changing the bank rate is an instrument. ठीक है. It's not a policy context, it's not a content, it's not market participants. Bank rates are an instrument used to implement a policy or a strategy. ठीक. To implement a policy, bank rates are a policy instrument. Cool. Okay, let's go to the next one very quickly.
There are 4 types of public policies. बड़ा interesting है, बहुत interesting है, आपको सब पता है. I'll just revise it for you. There are 4 types of public policies. 4 types की policies सरकार बनाती है. The government makes 4 types of policies. Protective policies, restrictive policies, regulatory policies, and facilitating policies. Protective, बचाने के लिए, to protect something. Restrictive, to stop something. Regulatory, to check something. Facilitating, to help something. ठीक. Protective, to protect. किसको protect करना है? Indian business को. Indian business को protect करने के लिए they have protective policies like custom duties. Ferrari अगर आप इंडिया में मंगवा रहे हो, right? You would have heard this. You would have heard this. iPhone US में सस्ता है, इंडिया में महंगा है. The iPhone is costly in India as compared to US. जिनके भी relatives US, Canada में होते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए iPhone ले आना. Because there is a protective policy in India. A Ferrari in US is for, let's say, what? It's like $2 lakh. मान लेते हैं, ठीक है? $2 lakh की Ferrari है US में, which turns to around 1.5 crores. 1.5 करोड़ की गाड़ी है US में Ferrari. इंडिया में वो 4 करोड़ रुपए की है. Because 200% custom duty लगती है. 200% custom duty. 1.5 करोड़ की गाड़ी पे 3 करोड़ रुपए टैक्स भरना पड़ता है. कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है उसको इंडिया लाने के लिए. 4 करोड़ की गाड़ी बन जाती है. प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, so that people do not buy the foreign goods. They support their own country के products, right? That is a protective policy. हर जगह नहीं होती है. Some luxury products especially. That is why luxury products are महंगा in India, right? If you buy a Louis Vuitton or you buy a Gucci in India, 80,000 रुपए की जैकेट है, 1.5 लाख रुपए का जंपर है, like doesn't make sense. If you go to US, if you go to UK, it is relatively सस्ता, ठीक है? What is here for 1.5 lakhs, there it is for 50-60,000 only. 3 गुना कम प्राइस है. It's not less, but 3 गुना तब भी कम है. Because India में we have custom duties on luxury foreign products. So people who are buying in India are actually very rich. ठीक है? Second is restrictive policies. Restrictive policy means to stop something like alcohol ban in Bihar or Gujarat, tri-states, right? They have restrictive policies कि बिहार में दारू नहीं बिकेगी, alcohol नहीं बिकेगी. Gujarat is a dry state. You cannot trade, buy or sell alcohol in Gujarat. That's a restrictive policy. All over India there is child labor ban. It's a restrictive policy. आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते. It is against the law. You can go to jail for that, right? You can go to jail for that. आपको जेल हो सकती है. 3 साल, 5 साल, 10 साल की आपको जेल हो सकती है बच्चों से काम कराते हो तो. That is restrictive policy of the government. Number 3, regulatory. Regulatory policies to keep a check on things, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे chapter number 5 में, like SEBI, IRDAI, RERA. RBI is a more of a regulatory thing, right? These institutions are set up under the regulatory policy कि कोई गड़बड़ घोटाला ना करे. देखो, कोई गड़बड़ घोटाला ना करे, कोई चीटिंग ना करे. There is fair ground for all the businesses in the country. The government ensures कि सबके लिए fair playground हो, right? If anyone wants to do a business, ऐसा ना हो कि they feel कि यार ये तो unfair है. I'm not getting customers, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे competition में हरा रहा है because they are favored by the government, right? It shouldn't happen. That is why we have regulatory bodies for that. Number 4, facilitating. That means helping policies. Like we were talking about subsidy or we were talking about surplus to MSMEs or there was a word I'm again forgetting. What was that? Stimulus packages to MSMEs, सस्ते loan देने to agriculture women, to women in rural areas who are making papads or achar, उनको 5-5 लाख रुपए का interest free loan दे रही है सरकार. That is facilitating policy. They are helping those small business people to do business. आप आओ, आप धंधा करो, आप पैसा कमाओ. सरकार is going to help you to give that 5 lakh rupees as like mudra loans you have in India. Mudra loans हैं, skill development centers हैं, right? All these things is what are facilitating policies of the government, right?
Regulatory policies for orderly functioning of particular industry, that is right. If any car manufacturing desires to set up in India, it has to form either 100% wholly owned subsidiary or joint venture, that is right. Tata Jaguar, Tata Land Rover, किया था ना उन्होंने. Is CBI and ED regulatory? नहीं यार, that is very different. We are talking about more of a business perspective. यहाँ पे हम धंधे की बात कर रहे हैं. That is more of like penal code, right? वो तो judiciary से अंदर आ जाता, थोड़ा justice के अंदर आ जाता है वो. Like restrictive policies in hospitals, no smoking. Schools में लिखा होता है no phones. Library में लिखा होता है no phones allowed. That is restrictive policy, right? They don't allow you to do things. We'll come to that, Koshti. Don't get bogged down by what is SEBI, IRDAI, RERA क्या है. Chapter number 5 में cover करेंगे चीजें. Right? Okay. Question on your screen again. फटाफट से answer करो. Then we go to the next one. Saima, chapter number 5, RERA, IRDAI सब कुछ पढ़ेंगे. We'll come to that. Chapter number 5 उसी पे है. Exactly, Pranav. That's a great concept if you know about PPP, which is purchasing power parity. पढ़ा हुआ है हम सब ने. But it's good that you are linking that concept here. You're right. Question on your screen, boys and girls. Startup India is an initiative under which of the following type of public policy? मुझे बताओ ये कौन से टाइप की पब्लिक पॉलिसी है दोस्त. स्टार्टअप इंडिया हो रहा है, क्या पब्लिक पॉलिसी है ये? रिस्ट्रिक्टिव है, फैसिलिटेटिंग है, रेगुलेटरी है, प्रोटेक्टिव है, क्या है? ओके, ठीक है. आई थिंक फिर से मिक्स्ड आंसर्स आए हैं. द आंसर इज फैसिलिटेटिंग. इट इज हेल्पिंग दोस्त. इट इज हेल्पिंग. स्टार्टअप इंडिया इज रेस्ट्रिक्टिव. कहां से आ गया? रेगुलेटरी कहां से आ गया? इट इज फैसिलिटेटिंग. इट इज हेल्पिंग. फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या है? फैसिलिटेटिंग का मतलब है टू हेल्प. टू हेल्प. Facilitating is to help, and here it is helping. Here it is Startup India, under which the Startup India में startups को help कर रहे हैं वो. It is facilitating. It is helping them. Right? Don't get confused. Exam में मत होना. यहाँ हो जाओ. Exam में मत होना. ठीक? Got it. Another one on your screen, boys and girls. फटाफट से आंसर करते हैं. समझते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, MCQs आंसर करते चलते हैं. What could be the term used for revising the already active policies? ये interesting है. Existing policy को revise करने को क्या कहते हैं? What do you call when you revise an existing policy? What do you call it when you revise an existing policy? What do you call it? Policy reform, policy reform, policy check, policy reform, reform, और कुछ reform. The answer is policy reform. इसको बोलते हैं policy reform. The biggest example of policy reform in India is GST. जो आपका आता ही नहीं है मेरा तो. GST. GST is the biggest policy reform in India. Existing service tax, value added tax, VAT होता था पहले. VAT और service tax को हटा के goods and service tax निकाल दिया. Existing active policy को change करके revise कर दिया. That is GST. It was a policy reform. ठीक है? It was a policy reform. Now, let us talk about LPG. इतने दिनों से जो you guys are asking me, sir, what is L, what is P,
and what is G? LPG का concept पढ़ा दो. LPG is the economic reforms of 1992. Okay, the economic reforms changes लाए गए economy के policy में. The economic policies of India were changed in 1992, right? And the new policy of LPG came into picture. Liberalization, privatization, globalization. Liberalization, privatization, globalization. Liberalization का मतलब है to become easier, to be less strict. Liberal हो जाता है, easy कर दो सब चीजें. Make the processes easy. Make doing business in India easy. Make it easy for people to do things in the country. ज़्यादा control मत करो. Right? That is what you keep shouting at your parents. ज़्यादा control मुझे मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा अपने आप को. That is liberalization. Letting people do what they want to do because they know themselves better. ज़्यादा मम्मी पापा बढ़ने की जरूरत नहीं है. That is liberalization. What is privatization? Privatization is getting government to control less and giving more business to the private people, to private individuals to build their business. सरकार अपना कंट्रोल कम करेगी और प्राइवेट कंपनीज को पुश करेगी कि भाई आप धंधा करो. एग्जाम्पल, MTNL का लैंडलाइन होता था पहले. There was an MTNL landline in every house. MTNL खत्म हो गई. This is privatization. Slowly, steadily उन्होंने क्या बोला, जाने दो. Airtel, Jio, Vodafone, then you had Docomo, Tata Indicom, सब companies आई. Let them do telecom business. Government is not going to do that. Let private individuals earn money, create employment in the country. Let them do that. Let them do that. Privatization. Number 3, right? Globalization. Okay, 1991, 1992 तो पूरे साल तक चला था. Essentially 1992 में खत्म हुआ था, इसलिए I always refer to 1992. It went on for a long period. Number 3, globalization. बाहर की countries से welcome companies to come and work in India so that we learn from them, and while they are making money, we learn from them how businesses are done so that we open our economy to the globe. हम अपने सर पे ऐसे घूंघट डाल के ना बैठे रहे. We open up to the world, right? We shouldn't be working in isolation. एकदम छुप के अपनी कंट्री में काम करे जा रहे हैं. It doesn't make sense. Be more social. Go out. Meet more people. That is globalization. और countries से मिलो. Create relations with a lot of companies. Get help from them. Give them help. उनसे help लो. उनसे सीखो वो क्या कर रहे हैं. And bring your economy to a more superpower position. That is globalization. ये 3 चीजें were the economic reforms of 1991, 1992. वो 2 साल तक चली थी, and this was done under the leadership of the then finance minister, Dr. Manmohan Singh. Okay. Now these reforms were done to open up the economy. But एक चीज बताओ फटाफट से, इतनी जरूरत क्यों आ गई 1992 में? एकदम से क्या हो गया? 1990 में क्यों नहीं? 1980 में क्यों नहीं? 85 में क्यों नहीं? 2000 में क्यों नहीं? ये इसी साल में इतनी हमें क्यों चेंज करने की इतनी जरूरत पड़ गई? Who can tell me? Let's see if you know this. Manvi, you're absolutely right. Liberalization means giving more freedom from restrictive trade policies to more of supportive policies, right? Exactly. LPG changed our policy from a closed economy to an open economy. That is right. But 1991, 1992 में एकदम से क्यों जरूरत पड़ गई हमें? 2000 में कर लेते, 1980 में कर लेते, 85 में कर लेते, 95 में कर लेते, एकदम से 1992 में ही करना है क्यों? Why was that done? Economic crisis, market crash, loans from IMF, World Bank, right? Foreign reserve ज्यादा नहीं बचे थे. That is right, Raghav. Because हर्षद मेहता स्कैम, ये एक मूवी एक शो देख के आ गए, हर्षद मेहता स्कैम, सूर्या सुरजेवाला सिंह, उसकी वजह से इकोनॉमी चेंज कर दो पूरी. ठीक है. India was under huge debt. That was their part of all of these things, but इसकी वजह से इकोनॉमी चेंज नहीं हुई. That was coincidentally तभी हो गया था. Because India was in deficit, deflation था, pressure from IMF, right?
Stock market crash दोस्त was a result of a lot of other things. स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से कभी देश नहीं चेंज होता है. स्टॉक मार्केट क्रैश होती है क्योंकि देश चेंज हो रहा होता है, तो रिवर्स होता है, राइट. Taking loan from the World Bank due to pressure from IMF, technology increase, deflation, loan from IMF, World Bank, public sector increasing loans. That is right. You guys know the answer. क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पता नहीं इतना ज्यादा क्यों मुझसे बुलवा रहे हो. You know the answers, right? Okay, but let us quickly understand. You know this. मैं पढ़ा दिया ये. This is what I've told you. But let me tell you, from a closed economy, from a closed door of India, we became a fierce, roaring Indian tiger, right? ऐसा क्यों हुआ था? Number one, there was low infrastructural development, okay? अपने देश में infrastructure बिल्कुल नहीं था. Roads were not there, buildings, housing societies, office spaces, कुछ था ही नहीं, ठीक है? सब कुछ ऐसे गांव बंजारा छोड़ के रखा हुआ था हमने. Then there was fall of Warsaw Pact between Soviet and its allies, right? There was a Soviet Union, which was Russia and Ukraine, and all these countries were part of Soviet Union and its allies. Poland was there, then other countries were there. ये सब आपका पार्ट थे, right? They were together. जैसे आज आपका यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारी छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके यूनाइटेड किंगडम बन गया है, और यू हैव द यूरोपियन यूनियन, जर्मनी इज देयर, देन यू हैव नेदरलैंड्स इज देयर, योर फिनलैंड, योर स्वीडन, ये सब यूरोपियन यूनियन में आ रहा है, राइट? ऐसे सोवियत यूनियन था, एंड दैट ब्रोक ऑफ इन 1991 1992. उनके बीच में लड़ाई हो गई. तो क्या हुआ? रशिया बिकेम इंडिपेंडेंट. Russia opened its economy. When Russia became independent, it opened its economy. कि यार अब तो मैं अकेला हो गया हूँ. I don't have my friends around me. तो मेरे को अब कुछ तो करना पड़ेगा. So Russia opened its economy, welcoming all the foreign people, US, UK, Europe, China, India. सबको उसने कहा कि आ जाओ, मेरे साथ काम करो, मुझे business दो, and I will do work for you. I will give you oil. I will give you this. I will give you a lot of other industries. I'll open. Come and do business with me, right? India thought कि यार ये तो अपना पड़ोसी है ऊपर का, रशिया तो अपना ऊपर का पड़ोसी है, अगर ये सारा बिजनेस ले जाएगा दुनिया का, हम तो गरीब के गरीब रह जाएंगे. इफ रशिया टेक्स अवे ऑल द बिजनेस, आई एम गोइंग टू बिकम वेरी पुअर, बिकॉज वो तो बहुत पैसा कमा लेगा, बट आई बीइंग अ नेबर टू रशिया, ज्यादा दूर थोड़ी ना हमसे, राइट? रशिया थोड़ा सा ही दूर है और हमारा फ्रेंड भी है, राइट? ज्यादा दूर मेरे बीच में चाइना आता है, बट उस टाइम इतनी लड़ाई नहीं थी. So basically, Russia was good friend of India. And when Russia was booming or going into an economic outburn of creating an economic advantage for themselves, India thought, boss, कुछ तो करना पड़ेगा. So ये भी हो गया, right? Infrastructure low था, रशिया से प्रेशर आ रहा था. Then there was formation of European Union. जब सोवियत यूनियन टूटा, there was formation of European Union, right? Europe में there was a union. All these 7, 8, 10 countries were coming together to form European Union, and it became easier to do business with Europe. पूरे यूरोप के साथ बिजनेस करना इजी हो रहा था, because all the countries were coming together as a union. That means अगर आपको 10 countries का access चाहिए यूरोप में, you just go and like talk to the European Union and they will give you access to entire Europe. हर कंट्री के पास जाके आपको बात करने की जरूरत नहीं है, जिसमें इतना ज्यादा टाइम जाता उस वक्त 1992 में, right? So it was becoming easier to do business with Europe. Opportunity create हो रही थी. And finally, there was huge burden from the loans we had taken from 1950 में रिपब्लिक हुए. बहुत सारा लोन ले लिया हमने वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, कि यार वी आर अ वेरी पुअर कंट्री, वी आर अ न्यू कंट्री, वी हैव टू डेवलप एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स. ब्रिटिश तो अपना सब कुछ निकाल के ले गए हमसे, हमारे पास कुछ नहीं है करने को, हमें लोन दे दो. एंड फॉर 40 years we were under the pressure of that loan. 40 साल तक हम लोन ही नहीं चुका पाए, right? We were not able to repay back that loan. और इतना ज्यादा आसपास the dynamics of the world were changing. We were under pressure of loan, and that is why this was done in 91-92. Because the world was becoming very hostile, the world was becoming very dynamic. India कहती यार फटाफट से opportunity ले लो और हम भी जाके अपना economy change करते हैं. And
thrusted, we pushed our economy, right? I've put these pictures for you to understand it better. We pushed our economy, the elephant, the huge elephant economy, towards more liberal, private, and global. India had to open up to survive the changes in the world, right? It did not have an option. कोई ऑप्शन नहीं था, मर जाते हमारा देश, राइट? देश would have ended into perpetual poverty if we would have not opened up our economy. आज जो आपके आसपास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, मॉल्स हैं, गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज है लोगों के पास, ये सब तभी हो पाया बिकॉज वी ओपनड अप, बिकॉज वी बिकेम सोशल विद द वर्ल्ड, एंड दैट इज वेयर इट केम फ्रॉम. ओके, लिबरलाइजेशन. Very simple, पढ़ा चुका हूं. You can read these slides on your own. I'm not going to go into details. Liberalization is again being less strict, being more helpful to the businesses in the country. आपको कंपनी खोलनी है, आ जाओ, 3 दिन में कंपनी खोल के दे देंगे. Register yourself in the country. Telling foreign people कि आओ, it's very easy to do business in India. We are very liberal. We are very understanding. हम ज्यादा रोक टोक नहीं करते हैं. हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे from a government perspective. We are very liberal. We are very easy people to do work with. We became a liberal economy, right? Then privatization. Privatization करने के 4 तरीके थे, right? We did 4 ways of privatization. The privatization was done in 4 ways. Number 1, delegation. Number 2, divestment. Number 3, displacement. Number 4, disinvestment. Very simple. Confuse नहीं होना है. Delegation, that means गवर्नमेंट क्या करती है अभी? टेंडर्स निकालती है, राइट? दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. डेलीगेशन से प्राइवेटाइजेशन करती है. वी वांट टू मेक अ फ्लाईओवर. इफ यू वांट टू मेक अ फ्लाईओवर, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि खुद फ्लाईओवर बनाती है. गवर्नमेंट क्या करती है? टेंडर्स निकालती है. इट ओपन्स अप अ टेंडर. प्राइवेट पीपल, प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स की जो फर्म्स हैं, वो जाके टेंडर करते हैं कि हम 50 करोड़ में बना देंगे. कोई कहता है वी विल मेक इट इन 44 करोड़. समवन सेज आई विल मेक इन 60 करोड़ बट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बनाऊंगा. समवन सेज आई विल मेक इट इन 25 करोड़, क्वालिटी छोड़ो, बना दूंगा, 15-20 साल चलेगा, राइट? पीपल आर ओपन अप. सो गवर्नमेंट सेज कि ठीक है, आओ, देश को आगे बढ़ाना है. आई वांट टू मेक अ फ्लाईओवर बट आई विल गेट इट फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स. उसके लिए मैं टेंडर ओपन करता हूं. एंड व्हेन समवन विंस अ टेंडर, लेट्स से वी गिव टेंडर टू दैट 60 करोड़ वाला कि वी वांट अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, वी विल पे यू 60 करोड़ रुपीस फॉर दिस फ्लाईओवर, बट आप बना के दो, राइट? एंड देन दे मेक अ ह्यूज फ्लाईओवर. और एयरपोर्ट बन रहा है किसी कहीं, आपका किसी सिटी में एयरपोर्ट बनता है. गवर्नमेंट डजंट मेक दैट एयरपोर्ट. गवर्नमेंट टेंडर देती है कि कौन बना के देगा. सो अदानी कहता है मैं बनाऊंगा, रिलायंस कहता है मैं बनाऊंगा, टाटा कहता है मैं बनाऊंगा, राइट? विप्रो कहता है मैं बनाऊंगा, लार्सन एंड टूब्रो कहता है मैं बनाऊंगा, राइट? सो टेंडर मंगवाते हैं. 7-8 पीपल सेंड टेंडर्स. लार्सन एंड टूब्रो कहते हैं मैं 180 करोड़ में बना दूंगा. ये फैसिलिटीज होंगी, सिंगापुर जैसा एयरपोर्ट होगा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होगी. सब लोग अपना टेंडर दे, गिव आउट डिटेल्स, गवर्नमेंट सेलेक्ट्स. दैट इज प्राइवेटाइजेशन. दैट इज प्राइवेटाइजेशन थ्रू डेलीगेशन. नंबर 2, डाइवेस्टमेंट, राइट? धीरे धीरे बेच रहे, पार्शियल सेल. डाइवेस्टमेंट, ठीक है, इज द पार्शियल सेल ऑफ ओनरशिप, स्लोली सेलिंग ऑफ मेजर स्टेक टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स. डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में एक ही फर्क है. डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में एक ही फर्क है, राइट? डाइवेस्टमेंट इज स्लोली सेलिंग द गवर्नमेंट कंपनी टू प्राइवेट पीपल. डिसइन्वेस्टमेंट इज उठा के मेजर शेयर सीधा बेच दो. नॉट स्लोली, वन टाइम, एक बारी में पूरा बेच दिया. दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट. डाइवेस्टमेंट इज स्लोली स्लोली बेचा. यही फर्क है. डाइवेस्टमेंट इज स्लोली स्लोली सेलिंग ऑफ मेजर स्टेक. बेच देंगे पूरा बट धीरे धीरे. इस साल 10%, अगले साल 10%, अगले साल 10%, अगले साल 10%. दैट इज डाइवेस्टमेंट. disinvestment is सीधा उठाए 60% बेच दिया प्राइवेट को, राइट? लाइक LIC इज डूइंग डाइवेस्टमेंट. 5% कंपनी बेच दी LIC सरकार ने. द गवर्नमेंट सोल्ड 5% ऑफ LIC, देन 7%, देन 20%, देन 25%, ऐसे करके बेचेंगे. डाइवेस्टमेंट है, धीरे धीरे बेचेंगे, राइट? नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट. लाइक MTNL, आई वाज टेलिंग यू, राइट? MTNL ने क्या किया? MTNL said I am not going to stop business. I will continue doing business, but मैं क्वालिटी नहीं दूंगा. मैं जहां हूं मैं वहीं रहूंगा. I will let private players kill me through competition.
right? MTNL will keep serving the customers, but I will not fight the private players. If they're going to beat me in competition, be it. I'm ready to be beaten because I want private players to be in the picture, right? That is called displacement. मुझे आओ displace कर दो. गवर्नमेंट कंपनी को आके प्राइवेट प्लेयर डिस्प्लेस कर देते हैं. लाइक एमटीएनएल बीएसएनएल गॉट डिस्प्लेस्ड बाय एयरटेल, जियो, टाटा इंडिकॉम, डोकोमो, वोडाफोन, आइडिया. ये सब आके एमटीएनएल बीएसएनएल को डिस्प्लेस करके चले गए, राइट? दैट इज प्राइवेटाइजेशन. डेलीगेशन, अगेन समीना, डेलीगेशन इज टेंडर से कॉन्ट्रैक्ट देके प्राइवेट लोगों से गवर्नमेंट वाला काम करवाना. नाला बनवाना है, नाली बनवानी है, सड़क बनवानी है, फ्लाईओवर बनवाना है. दे डू नॉट मेक देमसेल्व्स. दे टेल प्राइवेट पीपल की आओ कितने में बनाओगे. समवन से 40 करोड़ में बना दूंगा, पूरी शहर की नालियां बना दूंगा 40 करोड़ रुपए में. गवर्नमेंट से ठीक है, मेरे से 40 करोड़ लेना है, नालियां बना दो. So it's giving work to private people, to private individuals, to engineers, to private companies. In सबको they're giving out the work to private people. That is called delegation. They're delegating their work, right? That is privatization. Okay. Now then there is globalization. Globalization दो type की है, IFDI and then is OFDI. Inward foreign direct investment and outward foreign direct investment. बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा भेजती है, that is IFDI. So McDonald's coming into India, Domino's coming into India, Zara coming into India, H&M coming into India, Marks and Spencer coming to India, Netflix coming to India, Amazon coming to India, Microsoft coming to India, Google coming to India, Facebook coming to India, all WhatsApp coming to India is inward foreign direct investment. बाहर की कंपनीज आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, यहाँ ऑफिस बना रहे हैं, यहाँ के लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं अपना. दैट इज इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके. OFDI, Indian companies going outside and doing business in outside countries like Tata Consultancy Service, Wipro, Infosys, Airtel, PVR Cinemas, right? All these companies are going and doing business outside India. They're investing money outside India also. That is outward foreign direct investment. Flow of investment from Indian companies in companies outside India. That is outward foreign direct investment. ठीक. Now there are companies like FIIs. Those लास्ट से लास्ट सेशन में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में. इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. BlackRock, SoftBank, JP Morgan, Goldman Sachs, all these are foreign institutional investors. याद है मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पास पैसा है, गोल्डमैन सैक्स आएगा, आपका पैसा अफ्रीका की किसी कंपनी में लगवा देगा. Foreign institutional investors, large group investment companies with huge amounts of money who invest in companies in cross border transactions across the world. जापान में किसी अमीर कंपनी का, किसी अमीर आदमी का पैसा उठा के इंडियन कंपनी में लगा दिया. इंडिया में अंबानी के पास गए, अंबानी जी आपके पास बहुत पैसा पड़ा है, यू हैव 200 मिलियन, लाओ हमें दो, हम आपके 200 मिलियन 400 मिलियन बना देंगे, दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लो, हम आपको प्रॉपर्टी दिला देते हैं, आ जाओ, राइट? पाम जुमेरा में आपको, बुर्ज खलीफा में 10 फ्लोर दिला देते हैं, 10 फ्लोर से आपको 5 करोड़ रुपए हर महीने का रेंट आएगा, वी कैन डू दैट ट्रांजैक्शन फॉर यू, राइट? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. These big companies are foreign institutional investors which are helping in these cross-border global transactions. Okay, इसमें भी बहुत सारे CAs काम करते हैं. Cool. This is globalization, and with this we come to the end of chapter number 4 also. History के बारे में पढ़ा, independence, policy development and types, economic reforms, liberalization, privatization के 4 ways, globalization, IFDI, OFDI and FIIs. ठीक. ओके. व्हाट्सएप इंडिया में है क्या? साइल नहीं है क्या? व्हाट्सएप यूज नहीं करते हो आप? उसका ऑफिस भी है, क्यों नहीं है? इंडिया में भी ऑफिस है.
Absolutely, Harshit. FIIs have very, very strong, like talented people और tools. उनके बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं पूरे वर्ल्ड में कि कहाँ you can make more money. Exactly, that's right. Is this chapter clear, boys and girls? Let us spend 2 minutes. Let us spend 2 minutes for any doubts and questions that you have. For those who wanted a break, consider this as a 5 minutes break. For those who have questions, stay with me, ask questions, and I'll help you answer that. इसके बाद हम 30 minutes, I think overshoot कर दिया, चलेगा. 30 minutes हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग करेंगे रिविजन. हम लोग करेंगे दोस्त फुल रिविजन करेंगे, ठीक है? चैप्टर 1 to 3 4 के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. I will start with MCQs. I'm stopping my screen here while I will also answer your questions and open my revision वाली presentation, ठीक है? Ask your questions, ask your doubts. Very happy to answer all of that. Cool. I think I have this PPT ready. Should be fine. पूछते जाओ दोस्त अपने questions. रुकना नहीं है. रुकना कतई नहीं है. Yes, this is. ठीक है. Awesome. No doubts. Okay, we have doubts. मतलब इंडिया के ही है या फॉरेन कंपनी है? फॉरेन है. ग्लोबल कंपनीज पढ़ा था दोस्त. चैप्टर नंबर 3 से लिंक करो ना साहिल. हमने क्या किया? हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा ग्लोबल कंपनीज विच आर आल्सो इन इंडिया. अमेजन इंडिया में है, IBM इंडिया में है, कोलकाता में थी, याद है? अमेरिकन एक्सप्रेस पढ़ा था, गोल्डमैन सैक्स पढ़ा था, वॉलमार्ट पढ़ा था, राइट? ग्लोबल कंपनीज पढ़ी थी सारी, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा था. ये सब इंडिया में है, बट दीज आर फॉरेन कंपनीज. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है. परपेचुअल पॉवर्टी मीन्स हमेशा के लिए गरीब रह जाते. Right, Manvi? I think FDI में you have studied a lot of government route, automatic route. I'm not covering that because वो syllabus में है and you guys know that. I'm pretty sure you guys know that. Low external value of domestic currency means हर्षित जो इंडिया के साथ अभी हो रहा है, इंडिया वर्सेस डॉलर 83 रुपीस पे पहुंच गया है. लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी. How to work with FIS as a professional? Saima, get a rank in CA finals, get a rank in CA intermediate, get a rank in CA foundation, rank holder bano and apply. These companies only take rank holders. I can be very honest with you. ठीक है भाई, ऐसा मार्केट में ऐसा है. These companies, big BlackRock, SoftBank, Goldman Sachs, they take chartered accountants. They need chartered accountants, but they only hire rank holders. उनका criteria है दोस्त. Can't help it. So aim for ranks if you want to work in that work. You will have to start working hard. Go for articleships in big fours. Go for industrial training in these big companies. आपको अपनी profile वैसी बनानी पड़ेगी if you want to go into these companies. If that is what your calling is, ठीक है? वो आपका करने का मन है तो सही है इतनी मेहनत करना. आपका मन नहीं है, don't be disheartened कि यार रैंक कैसे लाएंगे आप. नहीं करना तो नहीं करना, उसमें क्या है? यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट. बोल कौन रहा है जो खुद ही क्लियर नहीं है? ठीक है, बट ठीक है, ज्ञान देना तो आसान है ना. खुद लाइक एग्जीक्यूटिंग योरसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, बट ज्ञान देना तो बहुत आसान है. तो मैं दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ. Market participants are people from whom you take feedbacks. ठीक है सर्वस. मार्केट पार्टिसिपेंट्स है लाइक लेबर यूनियंस, कस्टमर यूनियंस, या सड़कों पे जाके सर्वे लेते हैं, ऑनलाइन सर्वे लेते हैं. दीज आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स. ओके. Global companies had to register in India to business in Indian companies. Yes. What is the meaning of inward foreign direct investment in India and foreign institutional investors? Gurleen, you want me to re-explain? फिर से देख लेना, रिकॉर्डेड है. बट इनवर्ड इज बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है. ठीक है, आपके दुबई में कोई अंकल है, वो इंडिया पैसा भेज रहे हैं आपको बिजनेस करने के लिए कि गुरलीन मैं दुबई में बैठा हूं, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, गुरलीन आप अपना धंधा करो, अपनी बेकरी खोलो इंडिया में. इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है. बट गुरलीन इतनी अमीर हो गई
राइट? गुरलीन इतनी अमीर हो गई, वो अपने किसी फ्रेंड को जो यूएस में है उसको इंडिया से पैसा भेज रही है कि तू टेंशन मत ले, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये ले 1 करोड़ रुपए ले, अपना यूएस में तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर. दैट इज आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, दैट इज व्हाट इनवर्ड एंड आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स. कूल. मॉड्यूल के एमसीक्यू काफी है नहीं, और भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यू हैव क्वेश्चन बैंक्स अपलोडेड, यू हैव पास्ट मॉक टेस्ट है, पास्ट ईयर पेपर्स है, सब करना पड़ेगा दोस्त. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सब करना पड़ेगा. हाई एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर? एब्सोल्युटली नॉट. एक्सपोर्ट का तो मजा ही नहीं आएगा ना फिर. हाँ, चीप कर देगा, बट फिर एक्सपोर्ट करने का मजा क्या आएगा? डॉलर वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपोर्टर के मजे, इंपोर्टर को बहुत दर्द है. इट्स अ रिवर्स साइकिल, राइट? जिसको पैसे मिल रहे हैं डॉलर्स में उसको तो मजे आ रहे हैं. घर बैठे 7 रुपए वैल्यू बढ़ गई मेरी. एफडीआई इज मोर प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देन एफआईआई. यस, कैन से सो. डीरेगुलेशन मीन्स अपना कंट्रोल कम कर देना. ठीक है जेबा, डीरेगुलेशन मीन्स आई एम नॉट रेगुलेटिंग इट, आई एम नॉट चेकिंग इट एनीमोर. मैं कुछ चेक नहीं करता हूँ अब, राइट? दैट इज डीरेगुलेशन. लाइक जेबा's मॉम सेज दैट ठीक है, आपने अपना रूम साफ किया या नहीं, मैं चेक नहीं करूंगी, मेरा कोई लेना देना नहीं, अब आपकी मर्जी, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो. शी इज डीरेगुलेटिंग कंट्रोल ऑन यू. जेबा को करना है करे, नहीं करना मत करो, मेरा कोई लेना देना नहीं. दैट इज डीरेगुलेशन. साइमा, आपको रैंक लाना है, कितना पढ़ना पड़ेगा? जितना पढ़ रहे हो उससे डबल कर दो, बस रैंक आ जाएगी. ओके, लाइक WP Google. व्हाट इज WP Google? WP Google कैन ऑल्सो. WP Google क्या होता है ओमकार? एक बार समझाओ. That is also right. You can become a consultant with FIIs if you want to do a job. Our products will get international competitive. Our products will get competitive. Yes. अब मान लो गुजराती, दिस इज पीपल फ्रॉम अहमदाबाद, पीपल फ्रॉम गुजरात एरिया नो देयर इज अ वेरी फेमस इंदुबेन खाखरा वाला, राइट? शी सेलिंग हर खाखराज ऑल अक्रॉस द ग्लोब. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, जर्मनी, स्पेन, हर जगह जहाँ पे गुजराती लोग हैं उन सबको खाखरा बेचती हैं वो अहमदाबाद से, राइट? So because of globalization, her products have become an international product. WS रिटेल है. रिविजन के बाद करना था हर्षित, रिविजन तो होने दे दोस्त. बता दूंगा. I'll tell you that is very interesting concept. I'll पक्का tell you. Let me check दिवेश, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए. कोई लिंक चेंज हुआ होगा, मैंने तो देखे थे, बट I'll let you know मेरे को कहाँ दिखे थे. I'll let you know. Oh, WhatsApp, Google, yeah, they will come under globalization. That is right, Omkar. WP शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्सएप का. गजब. गुंजन, निधि कंपनी लॉ में पढ़ना. इस चैप्टर से यू विल नॉट बी आस्क्ड क्वेश्चंस. निधि कंपनी समथिंग दैट विल कम अंडर कंपनीज एक्ट एंड वो लॉ के सिलेबस में आएगा. 9 पढ़ लो मोर, बट विदाउट इंस्टाग्राम अगर 9 घंटे पढ़ोगे तो रैंक आएगी. 9 घंटे इंस्टाग्राम के साथ पढ़ोगे तो नहीं आएगी. फ्लिपकार्ट रेली हेडक्वार्टर सिंगापुर और बैंगलोर. बैंगलोर, सिंगापुर में एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है उन्होंने. ऑसम. प्रतीक, यू फ्रॉम गुजरात, तो फिर तो आपको पता होगा हिंदू बेन खाकरा वाला, वेरी फेमस. मैगी मसाला, गोलगप्पे मसाला खाकरा, मैगी मसाला खाकरा, पिज्जा मसाला खाकरा, चिली गार्लिक मसाला खाकरा. आई आई रीडन एवरीथिंग. मजेदार है वो भी. कूल. लेट मी चेक प्रणब, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस यार मैंने तो देखे थे. प्रॉब्ली आई वाज ऑन द ओल्ड वेबसाइट, कोई लिंक तो दिखा था मुझे. आई लेट यू नो. ठीक. कैन वी गो इनटू द रिवीजन? कैन वी क्विकली गो टू द रिवीजन? वी विल बी आउट ऑफ टाइम वरना. फटाफट से चलेंगे. आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन. वी विल डू दिस रिवीजन लाइक वी आर इन एग्जामिनेशन. ठीक है, मैं टाइम देखूंगा. ईच क्वेश्चन वी विल ओनली स्पेंड 30 seconds. 30 सेकेंड बिताएंगे हर क्वेश्चन के ऊपर, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा. इफ यू मिस इट, यू मिस इट. ठीक है, 30 seconds एवरी क्वेश्चन.
आई वॉन्ट यू टू बी प्रैक्टिसिंग लाइक योर एग्जामिनेशन टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, इसको वैसे ही करेंगे सो दैट यू गेट अ ग्रिप ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, give me a thumbs up, give me a yes, and we will quickly go into the revision. ठीक है, give me a yes, give me a thumbs up. I will count till 20 then, and हम शुरू करेंगे. हर क्वेश्चन को 30 seconds देंगे, फटाफट से चलते जाएंगे. I have some interesting questions, some easy questions, some tough questions. Mix bag है, easy questions भी हैं, tough questions भी हैं. ठीक है, okay. All those questions बाद में, articleship, topmost company सारे. Give me a yes, give me a thumbs up. I want all of you to be on the chat. Type your answers on the chat, be very active, and let us go and do this revision in the next 20-30 minutes. ठीक है? Okay, we are starting with the quiz. Every question will be there for 30 seconds only. फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, we go to the next one. Change of customers' liking from a romantic movies to crime thrillers can be classified amongst which of the following? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आंसर देना. मैं अपनी ऐड खुद कर रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, खुद ही ऐड करता जा रहा हूँ मैं अपनी. सामने से कोई नहीं बोल रहा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं ही बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 15 seconds left. 10. 10 सेकंड रह गए दोस्त. Let's go to the next one. The correct answer is trend. The correct answer is trend. Next question. लिखते जाना कितने मार्क्स आए आपके. Just keep writing somewhere how many correct answers you got so that you know कि आपको कितने मार्क्स आए हैं. ठीक है, give yourself 1 for every correct answer, give yourself 0 for every wrong answer. एंड में आपको समझ आ जाएगा आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, रैंक आएगी या नहीं. ठीक है, 15 seconds left on this one. फटाफट से सॉल्व कर दोस्त. मुझे अब मजा आ रहा है, अब मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है. अच्छा, पीपल आर राइटिंग डोंट डिस्टर्ब, बोलना बंद करो. ठीक है सर, सॉरी. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. The correct answer is internal environment. The correct answer is internal environment का part है corporate culture. Next question on your screen. Which of the following is not a characteristic? Question को बड़े ध्यान से पढ़ना दोस्त. Not a characteristic बोला गया है. Characteristic yes मत पढ़ लेना. बोला गया है not, पूछा गया है not, तो हम आंसर भी करेंगे not. Not a characteristic. 5, 4, 3, 2, and we are going to the next question. We are going to the next question. Okay. The correct answer here is they limit demand in the economy. It does not limit demand, it increases or it creates demand. ठीक है, next question. Chapter number 3 का question आगे दोस्त. Okay. फटाक से आंसर दे दो मेरे को.
Finacle banking software is a product of which of these organizations? Is it Wipro, Infosys, Microsoft, IBM? किसका प्रोडक्ट है Finacle? बताइए बताइए. Let's go to the next one. The correct answer is Infosys. Infosys का प्रोडक्ट है दोस्त. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का है, पढ़ लेंगे आप. Next question on your screen. Public debt is part of what? बताइए. Public debt is part of what? Public debt is part of fiscal policy, industrial policy, monetary policy, foreign investment policy. भैया कौन सी पॉलिसी का पार्ट है पब्लिक डेट? बताइए जरा, फटाफट बताइए, ध्यान लगाइए, आंसर बताइए. 5, 4, 3, 2, and we are going to the next one. The correct answer is fiscal policy. Okay, question next. Family members in an HUF are called what? क्या बुलाते हैं HUF के फैमिली मेंबर्स को? पार्टनर्स, ओनर्स, कर्ताज और कोपार्सनर्स. क्या बुलाते हो? चैप्टर नंबर 1 पहुंचा दिया सीधा. ये तो याद भी नहीं था, ये तो बहुत पुराना हो गया है. कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? Barkatullah has become Totla. He's saying co-partners. ये H कहाँ से आ गया बरकतुल्लाह? I'm just joking. दिल पे मैं लेना, मजाक कर रहा हूँ. Okay, ठीक है, good. 5, 4, 3, 2. Let's go to the next one. एग्जाम में इतने टाइम मिलेगा, क्वेश्चन समझ आया, टिक किया, भागो आगे. करेक्ट आंसर इज कोपार्सनर्स. वेरी गुड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास दोस्त. LLP, limited liability partnership, can have maximum of dash number of partners. UK accent में question. It's a UK accent question for you. A limited liability partnership can have maximum of how many numbers of partners? Great. The answer is coming. And the answers are also very UK answers. No limit, no limit, 50, 40, 30, 10. 10 वाला कौन है बे? 10 कौन लिख रहा है भाई? LLP में 10 members कब से होने लग गए? Okay, majority are right. Let's wait for last 10 seconds. पढ़ो question ध्यान से, फटाफट से पढ़ो, and then solve it. 5, 4, 3, 2, and we are going to the next one. The answer is there is no limit to the maximum number of partners. ठीक है, तो मुझे बता दो. The minimum number of directors required in a public company are. Oh my God. This is tricky. ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था एग्जाम में पूछ सकते हैं. बिल्कुल पूछ सकते हैं, सिलेबस में है, सब कुछ पूछ सकते हैं आपसे, फुल राइट है अपना. एग्जैक्टली हिमांशु, फ्रॉम यूके एक्सेंट टू गली बॉय एक्सेंट, एकदम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, लाइक हैना मोंटाना, राइट? आई डोंट नो इफ यू नो यू गाइस अबाउट हैना मोंटाना.
बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हमारे जमाने में था, मतलब ऑब्वियसली योर जमाना आल्सो नॉट दैट ओल्ड. अभी हैना मोंटाना का डिस्कशन मत शुरू कर देना. फोकस ऑन द क्वेश्चंस. समीर नोज हैना मोंटाना, मुझे लगा ही था समीर को पता होगा. 432 33543 सब मिक्स्ड आंसर. मजा आ रहा है मुझे तो. सब लोग का गलत इधर उधर आंसर आ रहा है, एक आंसर किसी का आता ही नहीं है, विच इज गुड. दैट मीन्स यू नीड रिविजन. ये आई ओपनर है, यहाँ पे गलती कर लो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. एग्जाम में मत करना दोस्त, एग्जाम में जाके गलत मत लिख देना. जस्ट दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एज एन आई ओपनर. अभी आप अपने मार्क्स खुद गिन लोगे मेरे को कितने आए हैं, आपको समझ आ जाएगा आपको कितने रिविजन की जरूरत है. एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस रिविजन. करेक्ट. The correct answer is number of directors minimum is 3. आ जाओ नेक्स्ट पे चले. कीर्ति ऑल्सो नोज हैना मोंटाना. Meditab Specialities Private Limited is a wholly owned subsidiary of which company? ये तो पक्का सबका मार्क कटेगा. मैं तो कह रहा हूँ 100% सबके मार्क्स कटेंगे. एक मार्क तो सबका गया. टफ क्वेश्चन आ गया. Meditab Specialities Private Limited is a wholly owned subsidiary of which company? Dr. Reddy's, Cipla, Asian Paints, Adani. चलो इजी है. एशियन पेंट अदानी तो नहीं होगा, ये तो हमें समझ आ रहा है. मेडिटैप पढ़ के मेडिसिन मेडिकल रिलेटेड है. अब डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है. तुक्का मार रहे हैं लोग. आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है. आई नो, आई एनी वे नो. ऐसे नहीं मालूम वैसे, पर ठीक है. ओके. सिप्ला 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 डॉक्टर रेड्डी. ठीक है, 10 more seconds. ये बुक खोल के आंसर नहीं देखना है, पता है तो बताना. डोंट ओपन योर बुक. इट्स नॉट एन ओपन बुक एग्जाम फॉर यू. इट्स अ रिविजन टेस्ट फॉर यू. इंटरेस्टिंग. मिक्स. आई एम हैप्पी किसी ने भी एशियन पेंट्स और अदानी नहीं लिखा है, वरना उसको तो अभी डांट लगती. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सिप्ला. सिप्ला की होली ओन सब्सिडरी है मेडिटैब. जिनका तुक्का लगा वो खुश, जिनका नहीं लगा वो कह रहे क्या बकवास है. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझो और आंसर करो. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रियल लाइफ क्वेश्चन है. लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. सेल्स पैटर्न may be different in different regions of our country. ठीक है, हमें मालूम है. Diwali is huge in North and West India, while Durga Puja is more relevant in East India. और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है. What kind of environment is this? Okay, demographics, socio-cultural, customer environment है, socio-cultural है, demographic है. ठीक है, let us see what is the right answer. The right answer, I'll just wait for another 5 more seconds. Okay, cool. Last 5 seconds for this question. The correct answer is socio-cultural. Socio-cultural. Okay, it's a socio-cultural environment की बात हो रही है. Culture related है, society related है. ठीक है. Next question, very quickly on your screen. Again, something you should know. Again, something we have studied in depth. Answer. Who amongst the following
works closely with leadership in decision making? बताइए. 10 more seconds. Cool. Majority of you say management analyst, and that is the right answer. Let's go to the next one. Oh, trick question. देखते हैं, मजा आएगा. Let us see who can answer this. वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, shouldn't take much time. Opportunity, weakness, threat. सब लिख दो, सब लिख दो. 5 more seconds on this. फटाफट से चैट में डालिए. The correct answer is weakness है दोस्त. Weakness है. Insufficient capital is a weakness. It's a weakness. ठीक है, it's a weakness. Cool. Let's go to the next one. फटाफट से चलते हैं. Caring for life is the motto or slogan of which of the following? अब मैं टाइम कम कर रहा हूं. I'm reducing the time on the questions. We will be much more quicker. Every question only gets 15 seconds now. ठीक है? Every question only gets 15 seconds. You have to be extremely fast. Fastest finger first खेलने वाले हैं KBC की तरह. फटाफट से डालते जाना answers, right? You should be ready on your keyboard or phone or wherever where you're typing from. फटाफट से टाइप करना है. और इसका आंसर is caring for life is Cipla Limited. That is right, dost. That is right. Let's go to the next one. 15 seconds on the clock. Your time starts now. Read and answer. Very simple again. Very simple again. अपने मार्क्स जरूर लिखते जाना. That is the real eye opener. Five, 4, 3, 2, and 1. The correct answer is indirect competition. Disposable income, affluent customers दोनों लेना चाह रहे हैं. Different product, same customer, indirect competition. Next चलते हैं फटाफट से. Read the question very carefully again and answer. Which of the following is not true about a limited liability partnership? Which of the following is not true about a limited liability partnership? Which of the following is not true about a limited liability partnership? 5, 4, 3, 2,
and 1. We go to the correct answer. We were asking not true. Incorporation not mandatory like normal partnership. It is mandatory. It is mandatory. So this is not true. Okay. Next question on your screen, boys and girls. When a new company issues shares for the first time in the stock market, what is it called? Is it called, basically, what is the meaning of IPO? IPO क्या होता है दोस्त? कंपनी का आईपीओ आता है, जब हम बोलते हैं कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ क्या होता है? Incorporation public offering, incorporation price offering, initial price offering, or initial public offering. Ten more seconds on my clock. नीचे मेरा टाइमर चल रहा है फोन में. 5, 4, 3, 2, and 1. The correct answer is initial public offering. The correct answer is initial public offering. Majority of you had the right answer. Let's go to the next one, boys and girls. Question on your screen. Which of the following internal strategies to respond to environment involves formulation and clarification of organization's mission? देखते हैं किसको एग्जाम्पल याद है. I've given this example, दोस्त एग्जाम्पल याद करो, मैंने दिया हुआ है एग्जाम्पल. Ten, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, and here you go. एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. हेल्दी राम का एग्जाम्पल याद करो. समोसे की जगह हेल्दी चीजें डाल दी. चेंज इन द मिशन, द चेंज इन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स. Administrative response. Okay. Next one. Which bank launched InstaBiz, a comprehensive MSME banking platform? Chapter number 3. ICI, Axis, HDFC, SBI. InstaBiz किसका धंधा है? Is a banking comprehensive MSME banking platform of which banking company? किसका है ये MSME banking platform? InstaBiz. ICICI बोल रहे हैं, एक्सिस बोल रहे हैं, HDFC बोल रहे हैं. 7 सेकंड बचे हैं मेरी क्लॉक में. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is ICICI Bank. Okay. Let's go to the next one. Dormant companies can be incorporated for which of the following purposes? 15 seconds starts now. For future projects, holding intellectual property, both A and B, only for creating a dummy company to book insignificant transactions. Dormant company किस लिए incorporate की जा सकती हैं? 10 more seconds to go on this question. हाँ समीर, we all remember पॉकेट में रॉकेट है. That आयुष्मान खुराना की एड we remember. बट इसका इंस्टाबीज थोड़ी ना था वो. इंस्टाबीज का था वो. I don't know. That was not इंस्टाबीज, but ठीक है. If you want to remember it like that, that is also fine. 5, 4, 3, 2, and 1. ठीक है. The correct answer is C. Both A and B. That is absolutely right. Let's go to the next one. फटाफट से चलते हैं. 5 more questions to go. सिर्फ 5 more और questions हैं. अगले 5 मिनट में खत्म कर देंगे. 5 और questions है बस. Race, age, income, educational background, asset ownership, location, etc. form part of which environment? Demographic, socioculture, economic, technological. 10 more seconds on my clock.
8 7 6 5 4 3 2 1 and time is over for this question. Race, age, income, background, asset ownership, location form part of demographic environment. They form part of demographic environment. Okay, let's go to the next one. Very simple. In which state did Jamnalal Bajaj start Bajaj Auto Limited? कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया था बजाज ऑटो मिस्टर जमनालाल बजाज ने? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या हरियाणा में? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या हरियाणा में? किधर शुरू की गई थी बजाज ऑटो लिमिटेड? 5 4 3 2 and 1. The correct answer for this question is राजस्थान. राजस्थान में शुरू की गई थी बजाज ऑटो लिमिटेड. ठीक है, नेक्स्ट वन जल्दी से करते हैं. डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड व्हाट? 15 14 13 12 8 7 6 4 5 1 3 2 and the time is up. Data which is useful in decision making is called information. It's called information. It's called information. Data useful decision making, information. Tick. Let's go to the next one. While analyzing technological environment, which of the following is not considered? Speed बढ़ती जाएगी. आखिरी के 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं. कितने क्वेश्चंस बचे हैं? We are at page 48. हमें 56 तक जाना है. ठीक है, अपने पास 3-4 क्वेश्चंस और हैं बस. 10 सेकंड देंगे हम सिर्फ इसके लिए. ठीक है, 10-10 सेकंड में कंप्लीट करेंगे आखिरी के 3-4 क्वेश्चन. सिर्फ 10 सेकंड. द फर्स्ट वन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाइल एनालाइजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10 9 8 7 6 5 1 and time is up. While analyzing technological environment, what is not considered? The relations with the country creating the technology. That is what is not considered. बाकी सब consider होता है दोस्त. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 सेकंड मिलेंगे. क्वेश्चन पढ़ते ही टाइमर स्टार्ट करूंगा. Which of the following is not a domain or characteristic of business and commercial knowledge? Very simple question on your screen. Shouldn't take much time. Your time starts now. It is independent. It is ever expanding. It is vast. It is multidisciplinary. Which of the following is not a domain or characteristics of business and commercial knowledge? 7 6 5 4 3 2 1. The time is up. 10 सेकंड मिलने हैं हमें सिर्फ इसमें. And the correct answer, which I've got for majority of the people right now, as I refresh my screen, is A, independent. ठीक? It is independent is not a characteristic, दोस्त. It is not a characteristic being independent. ठीक? Of BCK जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी ये characteristic नहीं है. उसकी ये characteristic नहीं है. Next one. नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? बता दो मुझे फटाफट से. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस owns which of the following? Indian Oil Corporation, GAIL Limited, Bharat Petroleum, or Reliance Industries? 5 more seconds to go. You only have 5 more seconds. Let us see if you can answer. इतना यूके निकल रहा है, ज्यादा ही लगता है वेब सीरीज देख लिया.
Okay, the correct answer is Gale Limited. The correct answer is Gale Limited. Ministry of Petroleum and Gas owns ये किधर गया? Gale Limited. Okay, cool. Let's go to the next one. I think दो ही और questions बचे हैं, ये और next. Middle East dropping oil revenues and foreign travel lucrativeness can be classified amongst which of the following? फटाफट से आंसर करो. Middle East dropping oil revenues and foreign travel lucrativeness. Lucrativeness मतलब attractiveness. ज्यादा लोग वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, शारजा जा रहे हैं, वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, अब तो अबू धाबी जा रहे हैं. Can be classified amongst which of the following? The correct answer is issue है दोस्ते. ड्रॉपिंग ऑयल रिवेन्यूज, ड्रॉपिंग, ये दोनों ड्रॉपिंग ही है, ऐसा पढ़ो इसको, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो. ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है वैसे तो, ऐसे होना चाहिए ड्रॉपिंग ऑयल रिवेन्यूज एंड फॉरेन ट्रैवल अट्रैक्टिवनेस, कि लोग अब यूरोप ज्यादा जा रहे हैं, दुबई कम जा रहे हैं. क्वेश्चन ऐसा ही है. मिडिल ईस्ट ड्रॉपिंग ऑयल रिवेन्यूज एंड फॉरेन ट्रैवल लुक्रेटिवनेस, दोनों चीजें ड्रॉप कर रही हैं, विच इज एन इशू, विच इज एन इशू. इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम. ज्यादा लोग घूमने नहीं आएंगे, तेल गिर रहा है और तेल से हम पैसा कमा नहीं पा रहे, लोग घूमने आ नहीं रहे हमारे पास, सब लोग यूरोप जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, इटली घूमने जा रहे हैं, दुबई कोई घूमने नहीं आ रहा. इट इज एन इशू फॉर दैट. ठीक, लेट्स गो टू, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. लास्ट क्वेश्चन ऑन जो स्क्रीन, फटाफट से करते हैं, टाइम पैसे ही 5 मिनट ऊपर है बट चलेगा. Which of the following statements about non-economic activities is true? Timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and number 1. The answer to this question, which of the following about is true, is even non-economic activities have economic dimension. Even non-economic activities have economic dimension. Okay. Last question का आंसर तो मैंने खुद ही दे दिया है. Did this revision help you? The answer is yes. आपको obviously ये help करा है, right? Okay. With this, we are end at the quiz also. Quickly type in the number of questions you got right. ठीक है? Type in the number of questions you got as right. Let us see किसको revision चाहिए और किसको आता है सब कुछ. I think there were 29 or 30 questions. 29-30 questions थे शायद. सिंपल है ना, ऐसा कर लेते हैं. देयर आर 59 पेजेस इन दिस, सो 58, इसमें से ये पेज माइनस कर दो 57 और शुरू के 3 पेज हटा दो तो बचे 54. 54 डिवाइडेड बाय 2 कितने क्वेश्चंस हो गए? 54 डिवाइडेड बाय 2 इज 27 क्वेश्चंस, करेक्ट? सो देयर वर 27 क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चंस थे. देयर वर 27 क्वेश्चंस. हाउ मेनी डिड यू गेट एज राइट? Okay, 25, 16, there were 27 questions, right? 20, 18, 9, I'm not naming किसको कितने आए. You know आपके marks, but I'm telling you others के marks so that you know where you stand. I'm not calling out names किसके कितने हैं, ठीक है? I don't want to do that. I will just tell you the average marks people are getting so that you know where you stand. 20, 21, 22, 16, 20, 25. You got 7 wrong. That means 20. All are correct. Awesome. Okay. 20, 18, 9, 12, 25, 16, 19. All correct. 20, 18, 22, 16, 2. Only 2 wrong. That means 25. Right? 8 wrong way. That means 19, 16, 15. Then you got 5 wrong. 22. खुद ही लिख दिया मुझे रिवीजन चाहिए. Awesome ज्योति, ये तो बेस्ट मार्क्स है. Self-awareness.
Oh, perfect. माइलापुरम, जो बाउंड रेडी फ्रॉम इंटर, यार फाउंडेशन की क्लास लेने आ गए। इंटर के स्टूडेंट्स फाउंडेशन की क्लास लेने आए हुए हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, मजेदार। 25, 19, 16, 15, 20, 20 राइट, 22, 22 ओके, 22, 20। अच्छा, मानवी ने 6 बार 22 लिख दिया है। मैं को सबके सेम मार्क्स कैसे आ रहे हैं? 12, 25, 26 ओके, 20। आई एम हैप्पी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट मोर देन 20, मतलब मस्त चल रहा है क्लास। 16, 16, 15, 26, 19, 15, 14, 19, 27, 18, 21, 20, 10, 19, 14, 26, 21, 29। I think if you got more than 20, अब परसेंटेज निकाल लो, देखो 20 आउट ऑफ 27 कितना परसेंट हुआ? 75 कुछ, राइट? कुछ 75% मार्क्स हुए, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बट ठीक है यार। एमसीक्यू में आई थिंक माई पर्सनल व्यू इज, इफ यू गॉट 24 एंड अबव, यू आर डूइंग गुड। इफ यू गॉट 20 to 24, एक रिविजन लगेगा। इफ यू गॉट लेस देन 20, दैट मीन्स एक बार यार फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, या तो जम के रिविजन करो या फिर से बैठ के एक बारी पढ़ो, ठीक है? बिकॉज आई कैन टेल यू, दिस सब्जेक्ट में स्कोरिंग इज सुपर इजी एंड इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। ये आपके पूरे मार्क्स को ऊपर उठा के ले जाता है। गेटिंग 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स के पेपर में आप ये उठा के ले जाओ, 50 मार्क्स के पेपर में उठा के ले जाओ। जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, छोटे सिलेबस होते हैं जो, उनमें तो आपको जितना स्कोर कर सकते हो करो, बिकॉज दे टेक योर एंटायर टोटल अबव 200, अबव 150 लेके जाते हैं पूरा टोटल को, राइट? वो जो टोटल में 200 नहीं बने यार, 150 नहीं बने यार, ये पेपर है जो आपको उसके क्रॉस करा देंगे। सो आई थिंक एटलीस्ट यू शुड स्कोर मोर देन 25। ऑसम, 24, 25 के ऊपर है, बहुत सही है। 22, 24, 25 है, एक रिविजन कर लो, यू विल स्कोर ऑलमोस्ट 85-90%। लेस देन 20, you know what you need to do. Revise with more questions, ask your doubts if nothing is clear, study material पढ़ो दोस्त, ठीक? And keep revising. हाँ, आगे भी ऐसे एमसीक्यूज लेके आना केशव, इतनी मेहनत लगती है, बट आई डू दैट। आई एम रेडी टू डू मेहनत विद यू। पूरे मेरे को 4 रातें लग गई है बनाने में, बट ओके। Cool. I think that's a good strategy, Harshit, right? Can we call it a day, boys and girls? We are already 12 minutes over time. I don't want to take more of your Saturday. जाओ मस्ती करो थोड़ी सी, हो गई 2 घंटे पढ़ाई। थोड़ा सा take a break of 1-2 hours, sit down in the evening, कुछ खेलो खाओ पियो। I'll also go eat something. Cool. Can we call it a day? Can we stop the session here? Give me a thumbs up. Tell goodbye to me. बोलो मुझे बस करो दोस्त, हो गया। बक बक करना बंद करो, जाओ अब, कल मिलना। So that I leave and I know I'm okay to leave. परमिशन दे दो हमें जाने की, प्लीज। Cool. Awesome. Awesome. नेक्स्ट रिवीजन 150 एमसीक्यूज, ठीक है अंकित? जरा बना के भेज देना मुझे, मैं पूछ लूंगा। मैं स्लाइड मैं बना लूंगा, क्वेश्चन आप भेज देना मुझे। Awesome. So let's call it a day and I'll see you tomorrow. कल सेशन है, एक बारी चेक कर लेते हैं। कल सेशन है is what I know, वरना आज इस महीने छुट्टी बहुत ज्यादा है। We have a lot of festivals. There's a couple of festivals that keep coming in and even I don't know. देखते हैं एक सेकंड, I'm just opening a schedule tomorrow. Yes, perfect. We have 16th October, 16th को session है, so I'll see you tomorrow then. Till then, take care and thanks for being so active on the chat and the MCQs. I will see you tomorrow. Take care, guys. Thank you.